आप उसको प्यार से समझाएंगे, हो सकता है वो गलती ना करें। तो टैक्स पेयर्स को डरा के धमका के टैक्स कलेक्शन ना करने से बेटर है कि इस तरह से चैनलाइज किया जाए, टैक्स पेयर्स वॉलंटरी फाइलिंग करें, वॉलंटरी टैक्स पे करें। और मैं आपको बता दूं, जेन्युइनली लोग टैक्स पे करना चाहते हैं, लेकिन वो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हम अपना बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम जीएसटी से बहुत डरते हैं और हम जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहते, बिकॉज जीएसटी डिपार्टमेंट में हैरेसमेंट होती है टैक्स पेयर्स की, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस की है, अपने फैमिली में देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है। तो जहाँ पे ये रोक लगेगी, लोग सामने आएंगे, बिजनेस करेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस लेंगे और सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। चलिए गौरी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही बेबाक तरीके से आपने समझाया कि क्या करने की ज़रूरत है, वित्त मंत्री के पास क्या स्कोप है और क्या किया जा सकता है रियलिस्टिकली भी और एम्बिशियसली भी। देखें, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में जुड़िए आके, आपने अपनी राय हमारे साथ शेयर की। तो चलिए इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा समय बचा भी नहीं है बजट पेश होने में। 11 बजे के आसपास आप देखेंगे कि वित्त मंत्री जी अपनी बजट स्पीच पेश करेंगी। अब इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे सहयोगी विशाल जी और प्रवीण जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको आगे की जो पूरी डिटेलिंग है वो वहाँ तक लेके जाएंगे जब तक वित्त मंत्री जी अपना बजट भाषण शुरू करती हैं। लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हमने समझी हैं अभी तक कि क्या हो सकता है इस बजट में, कि कितना स्कोप है इस बार बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स करने का। ये ज़रूर हो सकता है कि जो 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट है, शायद उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए। 1.25 लाख रुपये का जो एग्जेम्पशन आपको LTCG के रूप में मिलता है वो आपको शायद बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक कर दिया जाए। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हैं जो शायद आपको इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरे सहयोगी विशाल जी और प्रवीण जी अब आपको आगे की राह लेके जाएंगे पूरा बजट स्पीच तक। ओवर टू यू। में चंद मिनट बकाया है, लगभग 15-20 मिनट के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना रिकॉर्ड 9वीं दफ़ा बजट पेश करने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बजट को मंजूरी दी गई और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करने के बाद अब वित्त मंत्री संसद भवन में हैं और जल्द ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। और इसके साथ ही जो तमाम उम्मीदें हैं देश भर की कि इस बार बजट में आखिर क्या मिलने वाला है। पिछले साल तो सरकार ने बड़ी सौगात दी, लेकिन क्या इस बार सरकार कुछ देगी या आम लोगों के हाथ इस बार खाली रहेंगे, क्योंकि दुनिया भर में जो पूरा माहौल है, वैश्विक माहौल है, वो एकदम चुनौतियों से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार के पास खजाने की कैसी स्थिति है, क्या सरकार के पास इतनी गुंजाइश होगी कि वो कुछ डिसीजन ले। हालांकि मोदी सरकार असाधारण फैसले लेने के लिए जानी जाती है, जिन फैसलों की आपको उम्मीद नहीं होती, कई बार उस तरह के फैसले होते, कई बार जब उम्मीद नहीं होती कि सरकार टैक्स के मोर्चे पर कुछ करेगी, तब सरकार जो है आपको बड़ी राहत पिछले साल सरकार ने दी। इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी बड़ी राहत पिछले साल मोदी की सरकार ने बजट में दी थी जी। और इसके साथ हमारे सहयोगी विशाल शर्मा भी जुड़ गए हैं जी। बहुत धन्यवाद प्रवीण सर आपका। चूंकि अब मात्र जो है 15 मिनट का समय रह गया है सर, 15 मिनट का समय रह गया। बजट जो है अब वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगी। लेकिन जिस स्पीच सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया, अब वो बड़ा जो है आपसे हम समझना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो टेन्योर होता है वो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का होता है। प्रवीण सर, उन्होंने कहा कि अब जो है ये रिफॉर्म एक्सप्रेस होने वाला है। जिस तरह से आपसे भी जो है फ्लैगशिप शो जो है मनी सेंट्रल में चर्चा होती रहती है, आप कहते हैं कि विशाल कि पिछले साल भी अगर तुम देखो कि रिफॉर्म्स की एक झड़ी रही, 12,75,000 तक की अगर आपकी कमाई है तो वो टैक्स फ्री रहना हो, लेबर लॉज को लेकर जो 29 लेबर लॉज थे उनको खत्म करके सिर्फ 4 करना हो, इसके अलावा सर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात हो, जो जीएसटी जो बचत महोत्सव जो चला उसको लेकर जो बात सामने आई, उसके बाद हमने बहुत चीजें देखी कि चीजें जो है अपसाइड डाउन होती हुई भी दिखती हुई नजर आई। क्या उसकी कंटिन्यूटी दिखेगी? क्योंकि इस बार जो कहा जा रहा है प्रवीण सर कि इस बार का बजट जो है थोड़ा अनोखा हो सकता है, पार्ट ए पार्ट बी कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड, ऐसी बातें सामने आ रही। ओवर टू यू, ये पार्ट ए पार्ट बी क्या है सर? पार्ट बी में बेसिकली पार्ट ए में ऐलान होते हैं, पार्ट बी में असल में टैक्स और बाकी इकोनॉमी को लेके बातें की जाती हैं।
इस बार माना जा रहा है कि पार्ट बी में एक लंबा चौड़ा देश के लिए रोड मैप, एक विजन और एक इकोनॉमी के लिए एक पूरा प्लान सरकार यहाँ पे दे सकती है, वित्त मंत्री यहाँ पे लेकर उसको आ सकती हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से आया है कि इस बार पिछले जो अब तक के जो बजट आते थे उससे थोड़ा सा हटकर बजट इस बार सरकार पेश कर सकती है। विशाल जी, अब साहब सर कुछ जो सेक्टर्स हैं, जो बजट जो है किन अहम आंकड़ों पर अपनी नजर रखेगा, अब वो भी जान लेते हैं, हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट को लेकर क्या नंबर आ सकते हैं, उस पर ध्यान रहेगी, है कि नहीं प्रवीण सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट का जो रोड मैप है वो कैसा हो सकता है, बोरोइंग्स को लेकर जो है क्या आंकड़े आ सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, नॉमिनल जीडीपी और तमाम जो है सेक्टर्स को भी लेकर जो है बात सामने आ सकती है। एग्री सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहां कहा जा रहा है सर कि पीएम जो है सम्मान निधि योजना जो है मिल रही है लोगों को, अब वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बहुत लोगों की जो है आकांक्षाएं हैं कि आयुष्मान भारत योजना की जो कैपिंग है 70 इयर्स प्लस वाला, उसको कम कर दीजिए। इसके अलावा और भी सेक्टर्स के डिमांड है, जैसे अगर शेयर बाजार की बात की जाए सर, अभी जो है दिशाहीन नजर आ रहा है, अभी जो है गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन वहां की सबसे बड़ी जो डिमांड ये कही जा रही है कि जो टैक्स के मोर्चे पर है, पिछले बजट में भी सर हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, पिछले बार भी जो देखिए हेलियोस कैपिटल के जो समीर अरोड़ा साहब है वो कहते हुए नजर आए, तमाम दिग्गज कहते हुए नजर आए कि देखिए अगर एफआईआईज की सेलिंग का आंकड़ा अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके पीछे एक कारण जो अगर माना जाए वो है एसटीटी, एलटीसीजी, एसटीसीजी। इस फ्रंट पर क्या कुछ ऐलान हो सकता है प्रवीण सर? हो सकता है कि सरकार जिस तरह से जो खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये बजट रिफॉर्म वाला बजट होगा, इस तरह की लगातार प्रधानमंत्री पिछले साल से इस बात को कह रहे हैं कि अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो रिफॉर्म पे है। तो किन किन सेक्टरों में रिफॉर्म कर सकते हैं? फॉरेन फ्लो एक बड़ी परेशानी है सरकार की, सरकार का एक बड़ा सिरदर्द है, जिस तरह से आउटफ्लो हमने लगातार पिछले कुछ वर्षों में देखा है जी। और पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो वो लगातार एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। फॉरेन फ्लो के चलते रुपए पे प्रेशर बना हुआ है। तो क्या सरकार यहाँ पे मार्केट को कुछ ऐसा बोनांजा या ऐसी सौगात देगी जिससे कि जो फॉरेन इनफ्लो है उसका रुख जो है या ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो, आउटगो की जगह इनफ्लो वहां पे आता हुआ दिखाई दे? एक ये बड़ा मसला है। दूसरा, क्या कस्टम्स पे, जिसको माना जा रहा है पिछले साल से ही कि कस्टम्स पे सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, वहां रिफॉर्म का रुख जो है वो प्रवीण सर, इस समय जो ताजा फुटेज जो हमारे पास सामने आ रही है वो दिख रहा है कि संसद भवन जो है वो पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण। कुछ ही मिनटों में जो है अब बजट जो है वो पेश हो जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास की जो कुछ विशलिस्ट है, अच्छा ठीक है, विशलिस्ट जो है, विशलिस्ट को भी हम लोग आपसे जो है चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जो इनकम टैक्स के फ्रंट पर जो प्रवीण सर कहा जा रहा है कि नए टैक्स रिजीम में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपए से जो बढ़ाकर 1 लाख करने की मांग की जा रही है। ऐसा बात भी आ रहा है कि सर, लेकिन अभी जस्ट मेरी बात हुई कर्मचारी संगठन के जो है अध्यक्ष हैं मंजीत पटेल साहब, उन्होंने बात कही कि 1 लाख से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा है। प्रवीण सर, इससे हालांकि अगर मान लीजिए 75,000 से 1 लाख किया जाएगा तो कहा तो ये भी जा रहा है कि इससे जो है सैलरीड की जो है 13 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन ये मांग करना, देखिए डिमांड जो है वो तो अंतहीन है। और अंतहीन नहीं, डिमांड तो जाहिर तौर पे आ रही है, मांग तो बड़ी ये भी आ रही है कि जो 24 लाख रुपए तक पे जो से शुरू हो जाता है जो 30% टैक्स का, वो उसको बढ़ाकर 30 लाख या 40 लाख रुपए किया जाना चाहिए। क्या 30 लाख रुपए किया जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाए, या उससे और बढ़ाया जाएगा? और क्या जो टैक्स स्लैब हैं उनको भी इसी रेस्पेक्ट में आगे खिसकाया जाएगा, यानी जो 12.5 लाख या 12,75,000 रुपए पे जो अभी आपका तब 12,75,000 तक की कमाई फ्री होती है जी, क्या उसको और आगे बढ़ाया जाएगा? क्या 15 लाख रुपए किया जाएगा? तो उम्मीदें दरअसल और डिमांड्स तो बहुत हैं और हर सेक्टर की डिमांड है। सैलरीड वालों की अलग डिमांड है, पेंशनर की अलग डिमांड है, लेकिन क्या सरकार, असल में विशाल सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसा कर पाने की स्थिति में है? जी, अगर आप जो अभी आप बता रहे थे कि क्या बड़े चीजें हैं, क्या बड़े चैलेंजेस हैं, एक बड़ा चैलेंज है उसमें फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना, जी, जिसको 4.4% पे सरकार जो है वो लेकर आई है। अब क्या वो 4% पर आएगा या 4.2% पर सरकार उसको लेकर आएगी? फिस्कल डेफिसिट को सरकार कैसे मैनेज करेगी, एक ये बड़ा मसला है। डेट टू जीडीपी रेशियो को सरकार किस तरह से मैनेज करेगी, जी, यहां पे एक बहुत बड़ा मसला है।
सरकार का जो कर्ज है वो लगभग 60% होना चाहिए, डेट टू जीडीपी, उसको लाने की कोशिश है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सरकार के अगर कर्ज को देखेंगे, सारी सरकारों को अगर आप देश भर के, तो वो 85% तक चला जाता है जी। तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो फिर आ जाता, उसी रेस्पेक्ट में आ जाएगा कि अगर सरकार अपने हाथ खोलती है तो आपको बोरोइंग्स लेनी पड़ेंगी। अभी 14,20,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग सरकार के ऊपर है जी। क्या इस बार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या जो रिवाइज्ड एस्टीमेट अब जो सरकार देगी इस उस पर फिस्कल के, मौजूदा फिस्कल के, उसमें सरकार कितने बोरोइंग का आंकड़ा लेकर चल रही है मार्च तक के लिए, वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बड़ा मसला ये है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का खर्चा सरकार सैलरी और पेंशन पर करती है जी हर साल। एग्जैक्टली उसमें बढ़ोतरी, वहां अगर आप बढ़ोतरी करते हैं तो आपके पास जो बाकी के वेलफेयर स्कीम्स उसके लिए लेग रूम नहीं बचा। क्या, अरे भाई मैं अभी भी पिछले जब बैठा था लाइव में, तब मैं इस बात को कह रहा था कि सरकार एजुकेशन पर करती है 1,28,000 करोड़ रुपए खर्च जी। सरकार हेल्थ केयर पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, सैलरी पेंशन पे 4 लाख करोड़ और प्लस, 4.5 लाख या 4.5 लाख करोड़ रुपए अगर सैलरी पेंशन पे खर्च कर रही, तो आपके पास जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, दरअसल वहां पे फिर आपके पास फिर स्पेस कम होता जाता है। और सर इसी बात की जो तस्दीक जो इकोनॉमिक सर्वे में भी की गई, बिल्कुल, और एक जो बड़ी मांग आ रही है, और आफ्टर जो ऑपरेशन सिंदूर जिस चीज की जरूरत महसूस हो रही है कि वो है कि डिफेंस पे खर्चा बढ़ाया जाए। अभी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डिफेंस एक्सपेंडिचर है। क्या सरकार इसको और आगे लेके 8 या 9 लाख करोड़ रुपए पे लेके सरकार इसको लेकर जाएगी? तो ये जो चीजें हैं, इनके बाद सरकार के पास वेलफेयर स्कीम्स के लिए या टैक्स पेयर्स को हाथ में देने के लिए पैसा दरअसल बचेगा कितना? जी जी। अब प्रवीण सर, आपसे हमारा जो संबंध है वो लंबा है, क्योंकि कब जो बजट हम लोग बहुत पेश कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं हम लोग। सर बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये बड़ी एक जो है रोचक जानकारी रहती थी। हालांकि अब जो है आपकी जो है थाली की सब्जी से लेकर अगर आप स्मार्टफोन तक अगर सब चीज अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चीजों की जो दाम है वो जीएसटी काउंसिल तय करती है, अब ना कि वित्त मंत्री तय करती हैं। लेकिन बजट में जो है इंपोर्ट ड्यूटी के जो है घटने और बढ़ने का जो सिलसिला है वो पता चल पाता है। और इसी से बजट के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो मामला है, इसी कहानी को हम जोड़ना चाहेंगे आपसे, इंपोर्ट ड्यूटी वाले मामले को भी आपसे समझना चाहेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर सर, कमोडिटीज का रुख कब करना चाहेंगे? पिछले बार हम लोगों ने देखा था सर कि जो 15% से जो है सीधे 9% की गिरावट कर दी गई थी सरकार के द्वारा, और 6% के आसपास कर दिया गया था सोने चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी जो लग रही थी। अब उसमें गिरावट की बात कही जा रही है, इस बजट से कहा जा रहा है कि उसको 6% से घटाकर जो है 4% कर दीजिए। आप कितना सहमत हैं और क्या ये सरकार के लिए फीजिबल होगा करना? नहीं, देखिए इसमें अब दो एक बड़ी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं विशाल जी। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो जिस तरह का क्रेज आपको पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दिया है गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, अब तो सिल्वर को भी लेके, और केवल ऐसा नहीं है कि डिजिटल जो तरीके हैं जी, सोने और चांदी में पैसा लगाने की, ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड को खरीदने के, उनमें ही है। फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर खरीदने का भी सिलसिला वैसा ही चल रहा है। हर साल 700-800 टन का गोल्ड का इंपोर्ट भी भारत कर ही रहा है। अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है सरकार तो फिर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि आप ज्यादा डॉलर बाहर चुकाएंगे, आपका फॉरेक्स रिजर्व फिर कम होगा, फिर फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, रुपए पे फिर प्रेशर पड़ेगा। सरकार ये चाहती नहीं है जी। दूसरी तरफ मसला ये है कि आप इंपोर्ट कम करने के लिए अगर आप ड्यूटी बढ़ाते हैं तो वहां मसला फिर चला जाता है कि लोग स्मगलिंग करने लगते हैं, दूसरे तरीके अख्तियार करने लगते हैं कि किसी दूसरे तरीके से गोल्ड को फिर इंडस्ट्री ये भी तो तर्क देगी सर कि ऑलरेडी इतना महंगा है सोना, जो आम निवेशक है वो खरीद नहीं रहा है, आप इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा देंगे तो फिर लोग और डी इंसेंटिवाइज हो जाएंगे, ये भी तो तर्क आएगा। बिल्कुल, ये बात भी सही है। और सिल्वर को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिल्वर की चूंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अचानक से ऐसा लगा कि पूरी दुनिया को चांदी की जरूरत है, और अभी 2 दिन के क्रैश आया जी, तो 1980 वाली याद जो है ताजा हो गई सर। उस समय 90% का डेंट पड़ा था। अभी मेरी बात हो रही थी कमोडिटी एक्सपर्ट से, और हु बहु सर 1/3 तो आप मान ही लीजिए 30% का गिरावट एक दिन में। 1 लाख रुपए की जो गिरावट आई है चांदी में, लोग जो है जिस तरह की वॉलेटिलिटी जो देखने को मिली, हम लोग कई बार डिस्कस किया है हम लोगों ने, और ये बात को उठाने की कोशिश की है कि ऐसा अचानक चांदी में क्या हुआ है। अचानक से क्या ईवी से लेके आपके आपके बाकी के जो इंडस्ट्रियल यूज है,
चांदी का, वो क्या अचानक से बढ़ गया है आपका सिल्वर का, चाहे गैजेट्स हो या बाकी इंडस्ट्रीज हो, और इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं? और वही चीज़ हुई कि एकदम से प्राइस स्लम्प हुए, तो अब ये लग रहा है कि क्या इन सब इंडस्ट्रीज की डिमांड खत्म हो गई? अब क्या केवल काजू कतली पे चांदी का बर्फ लग के आ रहा है, वहां तक ही डिमांड रह गई, इतनी डिमांड? तो ये क्या ऐसी आर्टिफिशियल डिमांड थी, आर्टिफिशियल एक बबल क्रिएट हुआ चांदी में और फिर एकदम से क्रैश आया, जिसकी वार्निंग हम लोग लगातार दे भी रहे थे कि चांदी में थोड़ा सतर्क होकर रहने की जरूरत है? जी, अब सर थोड़ी देर में जो है लोकसभा में जो है बजट पेश हो जाएगा। मात्र 5 मिनट का जो है समय वो मात्र जो है शेष रह चुका है, और मार्केट का क्या अपडेट है वो जानने, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था सर कि हल्की फुल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, अब वो अब जो है तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। निफ्टी जो है 25,380 के आसपास कारोबार कर रहा है, 60 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक भी जो है 150 पॉइंट्स चढ़कर 59,758 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो सर सबकी जो निगाहें हैं, 9वीं बार जो है बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, तो देखना होगा कि मैडम का जो पिटारा है उससे क्या कुछ सामने आता हुआ दिखेगा। अब कुछ सर सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे जो हम चर्चा करना चाहेंगे, प्राइवेट जो चैलेंजेस है सर उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बात सामने आती है कि वो नहीं हो रहा है, मैं एक डेटा पढ़ रहा था सर, कहा जा रहा है कि ये 1 साल 2 साल की घटना नहीं है, लगातार अगर 10 साल पहले का भी अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उस समय से कहा जा रहा है कि जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। लोगों के पास तो पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा जो है देश में नहीं लगा रहे, विदेशों में वो पैसा लगा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, और ये कितना चिंताजनक है इंडियन इकोनॉमी को लेकर? प्राइवेट कैपेक्स को लेकर तो सरकार चिंतित है, सरकार कोशिश भी तमाम कर रही है। अर्थशास्त्री भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि साहब सरकार को फोकस ये करना चाहिए कि प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा मिले। नीति आयोग में जब सरकार की बैठक हुई अर्थशास्त्रियों के साथ, नीति आयोग के मेंबर्स के साथ, वहाँ पे भी इस बात को उठाया गया कि सरकार को अब अपना कैपेक्स छोड़कर जी कमान जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपनी चाहिए कि वो अब आगे आएं और आगे आकर जो है पैसा लगाएं, उनको अवसर मिलना चाहिए जी। लेकिन उसमें मसला ये है, सरकार मान लीजिए अभी कैपेक्स सरकार ने 11,21,000 करोड़ रुपए रखा जी। कहा जा रहा है सर कि इस बार 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। बिल्कुल, अब 10-15% का इजाफे का मतलब है 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कैपेक्स का पहुंचना जी। अब सरकार अगर अपना खर्चा रोक दे, सरकार कैपेक्स पे खर्च ना करे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ना आए, क्योंकि ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है उसमें प्राइवेट कंपनियां अपने हाथ में कैश रोक कर चल रही हैं। उनको लग रहा है कि ये एक्सपेंशन का शायद मुफीद वक्त नहीं है, पहले दुनिया भर के हालात थोड़े संभलें, क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया गया कि 10 से 20% चांस इस बात के हैं कि सब प्राइम क्राइसिस की रिसेशन आ सकता है और 2008 जैसा आ सकता है। तो क्या कंपनियां इस बात के, दुनिया भर में अगर आप कंपनियों को देखेंगे जो एआई की वजह से जो एक पूरा डिसरप्शन क्रिएट हुआ है, उसमें दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं। अभी हाल में अमेजॉन ने ऐलान किया कि वो 16,000 और आईटी सेक्टर की आप बात कर रहे हैं सर। आईटी सेक्टर का हाल तो बहुत बुरा, जैसा कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मार पड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा सर अब भारत की अगर जो बजट में एआई को लेकर विशाल जरूर कुछ बड़े फोकस हो सकते हैं सर, लेकिन सर भारत की 5 सबसे बड़ी अगर जो आईटी कंपनियां हैं, जो दशकों तक कहा जाता था सर कि हर तिमाही जो है हजारों जो है नौकरियां दिया करती थी, उन्होंने 2025 के पहले 9 महीने में सर बहुत ही मतलब तो आप समझिए डरावने वाला आंकड़ा है, 9 महीने में मात्र कुल मिलाकर जो है सिर्फ 17 कर्मचारियों को ही जो है ऐड कर पाई है बढ़ोतरी हुई। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये रहा, मात्र 17, क्योंकि अधिकतर लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आपको उसको कोट कर रहा हूं। इसके अलावा सर जो जेपी मॉर्गन का एक कोट है उसको मैं आपसे साथ जो है साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो कहा गया कि जिस तरह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी तो की जा रही है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं हो पा रहा है उसका जो है समय वो 12% से भी कम के आसपास है टू द जीडीपी। अगर इसका रेशियो से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कहा गया। तो दोनों बातों को हम समझना चाहेंगे सर आपसे कि नौकरियों के फ्रंट पर सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और तमाम तरह की, जिस तरह से आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी के इंटरवेंशन से नौकरियां खोने का डर हो रहा है, तो इन सब फ्रंट को कैसे टैकल करेगी सरकार? नहीं, सरकार के सामने जाहिर तौर पर चुनौती हो। देखिए हम लोगों ने इस बात पे भी चर्चा की थी जब बजट से पहले एक बार चर्चा कर रहे थे अभी हाल में जी कि नौकरियां पैदा करना सरकार के लिए अब से चैलेंज नहीं रहा, चैलेंजिंग नहीं रहा।
ये लंबा वक्त हो गया तब से सरकारों का सिरदर्द एक बड़ा ये रहा है कि देश में आबादी बढ़ी है, युवा बढ़ी है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जी, लेकिन वो कामकाजी नहीं है, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, वो उनके पास नौकरियां नहीं है, काम करने के लिए साधन नहीं है कि आखिर वो करें क्या। तो ये एक समस्या जिसको लेके सरकार 2024-25 का जब बजट लेके आई तो सरकार ने घोषणा की थी जुलाई में कि हम साहब जो है वो 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो है इंसेंटिव स्कीम लेकर आई सरकार। 1 करोड़ सरकार ने कहा कि हम इंटर्नशिप देना चाहते हैं जी, और इंटर्नशिप देने का ये रहा कि जब 18 महीने गुजरे तो मैं देख रहा था कहीं सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही इंटर्नशिप क्रिएट हुई जी। इससे पहले सरकार NSDC लेकर आई थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल लेकर आई थी, वहां पे सरकार ने कोशिश की कि लोगों के स्किल एनहेंसमेंट हो, उसमें सरकार ने इंसेंटिव्स दिए जी, जो लोग स्किल प्रोवाइड कराते हैं जी। लेकिन ये 2 बड़े जो प्रोग्राम थे यहाँ सरकार फेल हुई जी। तो आपकी सारी बातों का लब्बो-लुबाब अगर मैं देखूं प्रवीण सर, तो मेरा ध्यान जो है अब युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा कि युवाओं को लेकर जो है इस बजट में क्या कुछ नहीं, बात जो है ये नहीं है। देखिए, ऐलान करना अलग चीज है और ऐलान का वो लागू कैसे होंगे वो देखना जरूरी है। सर माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। अब संसद का जो लाइव फुटेज हमारे पास सामने आ चुका है और देखिए जो है संसद में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है वो बजट को पेश कर रही हैं। तो अब देखना होगा कि क्या बातें सामने आ रही हैं। अब हम लोग जो है अब सुनना चाहेंगे कि क्या बजट में ऐलान हो रहा है। On the table, a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, report for 2026 to 2031, Volume 1, main report of the 16th Finance Commission. 2, report for 2026-2031, Volume 2, annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition
with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions.
scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period.
For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new-age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions
such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust in WITS and Real Estate Investment Trust REITs, and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions.
Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current
10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products.
To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to, 1, set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3, upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, girls' hostel will be established in every district. To promote via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a 2-week training course in hybrid mode in collaboration with the, Indian Institute of Management.
A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakigadi, Adichanallu, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A credit-linked subsidy program, B,
scaling up and modernization of livestock enterprises. C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices.
invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. And northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 25-26
2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities, to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July,
and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose
to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a
stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate
certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. While calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases
for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment.
To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information
with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. One girls' hostel will be established in every district. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women
take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways
over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul. तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो अपने जो बजट भाषण को संबोधित कर रही हैं, तमाम फैक्टर्स को वो गिना रही हैं और बता भी रही हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसका इंतजार जो है सैलरीड और मिडिल क्लास कर रहे थे। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या निकला है पिटारे से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रदीप मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर उड़ान ग्रुप के। सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे 9 पर। थैंक यू विशाल जी। सर, सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क जानना चाहते हैं। बजट की जो अभी तक की जो आप भाषण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको कैसा देखा आपने? क्या इट इज मीटिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस या कुछ जो है लैक्यूना आपको भी नजर आ रहा है? देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशन थी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, Exactly. क्योंकि लग्जरी हाउसिंग तो बन रहा है पर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन पा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं उसकी रीडिफाइन करने की जरूरत थी, उसकी डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत थी। 45 लाख का जो कैप है वो कहीं हद तक मेट्रो सिटीज में लॉजिकल नहीं बच जाता। कीमतें बहुत बड़ी है, लैंड कॉस्ट भी आप देखेंगे तो 4 to 5 टाइम्स ऊपर चली गई है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है। तो उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का बनना मुश्किल हो गया। अब लग्जरी डेवलपर की भी मजबूरी है, क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो लग्जरी हाउसिंग करके उसको मीट आउट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को जी। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का ना आना ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है। इंडस्ट्री तब चलती है जब उसके अंदर सभी चीजें चलती है। मतलब मैं कहूँगा ऑटो भी चले, रियल एस्टेट में लग्जरी भी चले, अफोर्डेबल भी चले, तब उस इंडस्ट्री का चलना कहलाएगा। मैं आपको रोक रहा हूं सर, लेकिन जो प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशंस का जो दौर चला था उसको मैंने बहुत ही बारीकी से कवर भी किया था। उस समय भी ये मांग आ रही थी, कहा जा रहा था कि ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के जो फ्लैट्स हैं वो तो मिनटों में बिक जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखते हैं। लेकिन 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख के आसपास के घरों की जो बिक्री है वो थोड़ी सी जो है स्थिर नजर आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि घर जल्दी बिक रहे हैं और जो सेल्स अफोर्डेबल की कम हो रही है। इसका मेन वजह है सप्लाई कम आ रही है। अगर सप्लाई ही कम होगी तो आपको नंबर्स दिखेंगे कैसे? अब सब तो लग्जरी की दौड़ में है, सबको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो लग्जरी बन रही है और लग्जरी बिक भी रही है। मार्केट में इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर, एंड यूजर सब हैं, तो इस कारण से लग्जरी में सेल्स आपको दिख रही है। ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन रही है, सप्लाई नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई कैसे आए। जी। अब चलिए सर, अब इंफ्रा पर जो है रिस्क गारंटीड फंड की जो बात सामने आ रही है, उस बात को भी जो हम आपसे जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला क्या है सर इंफ्रा को लेकर जो है? देखिए, गवर्नमेंट लोन के अगेंस्ट में गारंटी लेती है जी। अब अगर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो इंफ्रा डेवलपमेंट, जैसे हाईवे है या मेट्रो है, इनमें डेवलपमेंट होती है, मतलब लोग सामने आते हैं और प्राइवेट डेवलपर्स भी इनको बनाते हैं, तो वहाँ चीप रेट के ऊपर चीप इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलना और प्राइवेट एंटिटीज का घुसना, ये अपने आप में डेवलपमेंट लेके आता है। सर, इसको अगर मैं व्यूअर्स के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझूं तो मान लीजिए जैसे हम लोग का जो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट था जो फ्रॉम गुजरात टू बॉम्बे बन रहा था, उसमें जो है जापान से पैसा आ रहा था बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। आप क्या वैसे ही बात कह रहे थे? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। जब प्राइवेट डेवलपर्स आएंगे, देखिए इंडिया में भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें क्यों पैसा बाहर से लेना पड़ रहा है? जब मैं कह रहा हूँ प्राइवेट एंटिटीज को एंट्री कराई जा सकती है और बेसिकली लोन अगर कहीं से आ रहा है और लोन की गारंटी भी ली जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत रियल एस्टेट में यह है कि इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है। जब इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है तो इसमें हमेशा से इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को भी रहता है कि शायद पैसे की रिकवरी ना हो पाए। जब गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे उसकी सिक्योरिटी होगी, गारंटी होगी, तो वहां पर प्राइवेट डेवलपर अच्छे से इंफ्रा डेवलप कर पाएंगे और उससे पूरे एरिया का विकास होता है। पिछले 5-7 सालों में देखा गया विशाल जी कि इंफ्रा ने ही रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट किया है। तो इंफ्रा का रोल पिछले 5-7 सालों में बहुत रहा है और आने वाले सालों में भी इसका दिख रहा है। ओके। अब सर, जो सबसे जो बड़ी बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स के फ्रंट पर जो है मिडिल क्लास को जो है निराशा हाथ लगी है कि कोई स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया सर। हालांकि हम लोग मान रहे थे कि पिछले बार भी बजट में हम लोग मान रहे थे कि अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी, तो 12 लाख, अगर आप सैलरीड है तो 75,000 और ऐड कर लीजिए तो 12-75 के आसपास की थी। उसके बाद जो है अच्छा खासा जो है जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा था। लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है हाउसिंग सेक्टर्स में घुस रहे थे, रियल एस्टेट में जो है पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब इसमें किसी भी तरह का जो है चेंज ना होना, ये कितना दुखद आप मान रहे हैं या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ेगा रियल सेक्टर को? देखिए विशाल जी, पिछली बार बहुत कुछ मिल गया था, ठीक है, अब हर बार आप उम्मीद इतना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो जी,
तो एनआरआईज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें टीडीएस अपने आप में टीडीएस एक सब्जेक्ट होता था जी। तो उसको टैन नंबर बायर को लेना पड़ता था, तब वो टीडीएस डिडक्शन पॉसिबल हो पाता था। अब उसको इजी कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कैसे लाई जाए उस पे वर्क जरूर किया है। जी, अब हमारे साथ डॉक्टर अजय दुआ साहब जुड़ चुके हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद जी। जी सर, ओवर टू यू, आपसे फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर अब तक की बजट को जो ऐलान हुआ? अब तो बजट पूरा हो गया है प्रेजेंटेशन। जी वो फाइनेंस मिनिस्टर महोदय की का भाषण समाप्त हो गया है और उन्होंने बजट को कंसिडरेशन के लिए मूव भी कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है और सबका कुछ ना कुछ नहीं भी दिया गया। तो इस बजट में प्रयत्न किया गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर महोदय के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसको कैसे बांटा जाए जिससे निराशा भी ना हो, पर ये भी कह गया है कि सबका जिसे कहते हैं अपेक्षा के अनुसार में वस्तुएं नहीं या जो वो अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं दिया गया। मैं इनकम टैक्स तरफ में बहुत सरकार ने प्रोसीजरल पॉइंट्स बहुत बनाए हैं, बट कोई रिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड लोगों के लिए होता है उसमें अपेक्षा थी कि 75,000 से शायद ₹1,00,000 कर दिया जाए, वो नहीं किया गया। कोई भी रेट में टैक्स रेट का जो एप्लीकेबल टैक्स रेट चल रहे थे उसमें किसी स्लैब में या किसी ओवरऑल ग्रुप में या एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई गई। पर ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जहाँ पे भी सहूलियत दे सकते थे, जैसे टीडीएस में किया गया है, जैसे किया गया है पेनल्टीज़ के ऊपर कि आप डिक्रिमिनलाइजिंग किया गया है इनकम टैक्स के रिटर्न्स में अगर कोई गैर असेसमेंट कोई मिस स्टेटमेंट की हो इत्यादि, इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के उनको ईज़ ऑफ जिसे कहते हैं ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स का जरूर सरकार ने व्यवस्था की है। सिमिलरली मैं बोलूँगा जो हमारे कस्टम्स ड्यूटी है निर्यात आयात के ऊपर उसमें कुछ रेट्स जरूर कम किए गए हैं। उसमें भी कुछ प्रयत्न किया गया है कि प्रोसीजरल मैटर्स में जिससे थोड़ा ईज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए उसका प्रयत्न किया गया है। और साथ साथ उधर ये भी किया गया है कि 2-3 विषयों में जरूर सहूलियत है। एक है कि जो आइटम न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए आएंगे, पावर वगैरह आजकल हम बात कर रहे हैं कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स की न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कुछ सहूलियतें दी गई हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की। डेटा सेंटर के और जीसीसीज पे जो हिंदुस्तान में भारतवर्ष में आजकल आ रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ भी दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर को, जो क्लाउड सर्विसेज क्रिएट करेंगी और जिसमें ये जो डेटा सेंटर्स हिंदुस्तान में हैं उसके थ्रू जो डेटा वहाँ क्लाउड सर्विसेज में भेजा जाएगा उस काम के ऊपर इंसेंटिव्स रखे गए हैं टैक्स के। तो मैं और कुछ टेक्नोलॉजी के तरफ से सरकार ने प्रयत्न किया है कि नई टेक्नोलॉजी आने के लिए सरकार उसके अंदर भी जो लाने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको कैसे सहूलियत दे सके। तो मैं कहूँगा कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था सरकार ने इतना बड़ा वाइड कैनवस में बहुत चीज़ें करने का प्रयत्न किया है, कुछ पूरे रूप से कर पाए, कुछ बस उसका ध्यान आकर्षित किया। जैसे कमेटी बना दी गई है बैंकिंग के लिए कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग विभाग में या बैंक्स के अंदर क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसको डिटरमिन करके आगे लाने का। तो और कुछ पे थोड़ा एक्शन ले लिया है। तो
ये ही मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क रहे। लेकिन अजय सर, आपसे बजट से पहले भी मेरे साथ आपकी चर्चा हुई थी, लेकिन 8th पे कमीशन सैलरीड क्लास को, करोड़ों लोगों की नज़र जो थी वो बजट को लेकर थी, वहाँ कोई ऐलान नहीं होता हुआ दिखा सर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? 8th पे कमीशन, सैलरी, पेंशन में जो बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, उसको लेकर कोई भी तरह की बात नहीं की गई। अगर विशाल जी आपको याद हो जाती, 2-3 रोज पहले ही हमने चर्चा की थी जी मुझे नहीं लग रहा था, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा जी भी था जी जी कि शायद पे कमीशन के बारे में जिक्र भी ना करें। जी अगर कोई जिक्र करेंगे तो वो इंटरनली पे कमीशन को कह सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट 14 महीने में नहीं 12 महीने में हमें दे दीजिए, आप दिसंबर आखिर तक। अगर वो दिसंबर आखिर तक दे सकते हैं तो फिर जो बैक पेमेंट्स करनी पड़ेगी, इफेक्ट का तो रहेगा ही जनवरी 2026 से, जब कभी कमीशन की रिपोर्ट आए तो वो अगले साल के बजट में उसकी प्रोविजन कर सकेंगे। और क्या उनका रवैया रहेगा कि वो कैसे ट्रीट करेंगे पेंशन के मुद्दे को, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कि ये सब चीज़ें वो पे कमीशन ही तय करेगी। फाइनेंस कमीशन में ये बजट में आने की इसकी आवश्यकता नहीं थी। जी अजय सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो निराशा हाथ लगी है वो मार्केट को लेकर है। एसटीटी की जो दर है उसको जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है। फ्यूचर्स पर जो एसटीटी है वो 0.00 से बढ़ाकर जो है 0.05 कर दिया गया। इसके बाद जो है मार्केट्स जो है क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, मार्केट्स 800 पॉइंट, थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन था, 250 पॉइंट और या 350 पॉइंट निफ्टी डाउन था। ये जरूर मार्केट को, उसके फ्यूचर्स के मार्केट काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको आपने 2.5 गुना 12.5% से 50% पे कर दिया है, तो 4 गुना ही पूरा बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स को जरूर फर्क पड़ता है एसटीटी का। पर मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मार्केट ने थोड़ा जो निराशा दिखाई है वो एक एसटीटी के ऊपर ही नहीं है, वो है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो उम्मीद कर रहा था उसके ऊपर कोई कंसेशन नहीं है। लोग कह रहे थे कि 2018 का पिछला जो वृद्धि किया गया था या कमी किया गया था वो 7 साल हो गए हैं, कोविड से वो पहले का था। अब वो रेट को रिवाइज करने की अपेक्षा कर रहे थे, कारण प्राइवेट सेक्टर को अगर फैसिलिटेट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो शायद वो सरकार उस रेट्स को कम करेगी, वो नहीं किया गया। पर्सनल टैक्सेस में नहीं किया गया, जिससे कंजम्पशन बढ़ने का, अब अगर गरीब आदमी के हाथ में या एवरेज आदमी के हाथ में अगर आप इनकम देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंजम्पशन पे कर देता है, खर्चा सेविंग्स कम करता है, वो भी नहीं किया गया। तो ये मार्केट थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लेके जो भी अपेक्षा कर रही थी वो इतना नहीं किया गया। एग्रीकल्चर पे किया गया कि वैल्यू एडेड नई चीज़ें, कोकोनट या आप कोको, कैशू नट, ऐसी चीज़ें का और मेरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ एम्फसाइज किया गया। पर ये सब मार्केट के लिए इंस्टेंट फायदे वाली चीज़ नहीं थी। ये सब डिज़ायरेबल, उचित है, इनका प्रभाव भी जो इकोनॉमी के ऊपर या कृषि समाज के ऊपर पड़ेगा उसमें टाइम गैप रहता है 2-3 साल का। इसलिए मार्केट ने कोई अपना पॉजिटिव, उसको बजट को कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया। एक लास्ट सवाल अजय सर, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत कीमती समय है। एक लास्ट सवाल, क्या सर बजट के बाद भी कोई बड़े ऐलान की उम्मीद की जाए मोदी सरकार से? जी, जो वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस हम चला रहे हैं। जी हाँ, रेलवेज का तो उन्होंने कर दिया, वो मुझे बताना चाहिए था। रेलवे कॉरिडोर्स तो बहुत घोषित किए हैं, वो अच्छा है लॉजिस्टिक्स के रूप के लिए, पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए। और आप सरकार ने जो कैपेक्स पिछले साल 10.5 लाख करोड़ है, इस साल 12 लाख करोड़ की बात हो रही है, कुछ मिला के 12-13% वृद्धि की गई है। और उसमें रोड्स, हाईवेज जिसे कहते हैं, हाईवेज, रेलवेज को महत्व रहेगा, कारण कोई नया सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया सरकार ने कि हम और किस चीज़ पे ये
एम्फसाइज करने वाले हैं। जरूर सरकार ने कहा है हम 40,000 करोड़ रुपए के आप प्रोविजन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में इसको देने का। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मैं जो बात कर रहा था वो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। पर ये मैं तब भी कहूँगा इन सबको ये जैसे इंक्रीमेंटल कहते हैं कि पहले थी स्कीम, पहले स्कीम के लिए हमने एक्स दिया था, अब हम एक्स को वाई और दे देंगे, पर एक्स का डबल एक्स नहीं किया या एक दो नई स्कीम डालने का। डेल्टा डेल्टा जिसे इंक्रीमेंटल कहा जाता है कि ग्रेजुअली आप बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट शायद इन चीज़ों की अपेक्षा कर रही थी, नहीं मिलने पे वो ठीक हो जाएगी मार्केट। सरकार भी जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा, 4 स्टेट्स में, चारों महत्व के स्टेट्स हैं, शायद उससे पहले कुछ और भी अनाउंस कर सकती है। और अगर जनरली मार्केट का ऐसा ही रहा कि मार्केट ऊपर नहीं चढ़ती, वो भी सरकार को उसका नोट करके हो सकता है कि कुछ और स्कीम्स भी आ जाएं। पर नॉर्मली जब तक बजट पास नहीं होगा सरकार कोई नई घोषणा नहीं करेगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला। मनी 9 के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब रुक करेंगे फाउंडर साहब का। सर, आप बता रहे थे कि रिसाइकलिंग ऑफ एसेट्स को लेकर भी जो है बड़े ऐलान किए गए हैं इस बार के बजट में। उस मामले को भी आप समझाइए। देखिए, अभी पूरा फाइन प्रिंट नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही है वो ये कि रीट को पुराने प्रोजेक्ट्स में भी लाया जा सकता है। क्योंकि जब पुराने प्रोजेक्ट्स में रीट आएगा तो उसकी लिक्विडिटी फास्ट हो जाएगी। लिक्विडिटी फास्ट होगी तो उससे नए प्रोजेक्ट्स, जब पैसा वापस आएगा मार्केट में तो उससे नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगेगा। तो ओवरऑल ये इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छा है जी। साथ में यहाँ पर Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर भी इंफ्रा को लेके बूस्ट किया जा रहा है। जहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, छोटे सिटी जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, इनमें भी इन्विट और रीट लेके आया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी डेवलपमेंट्स वहाँ पर आएंगी जी। तो यहाँ इन शहरों में भी रियल एस्टेट एक अच्छा बूम करेगा। देखिए, रियल एस्टेट अकेला सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, नहीं सर। इसके एंसिलरी इंडस्ट्री जो इसके साथ की है, बहुत सारे हैं और बहुत सारे इस पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो जब कोई घर खरीद रहा है या घर बना रहा है तो फायदा सबका हो रहा है। तो इसका फायदा मेरे को लगता है छोटे शहरों का फायदा पूरी इंडस्ट्री को, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होने वाला है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और देख रहा हूँ, प्लीज बताएं सर। टेम्पल सिटीज पे भी बात की गई जी, जैसे अयोध्या या वृंदावन की टेम्पल सिटीज हैं, इनको लेके भी यहाँ पर गवर्नमेंट अब सीरियस दिख रही है। ये भी गवर्नमेंट के एजेंडा में, इसको भी अच्छा डेवलप किया जाएगा। साथ में मेडिकल हब्स और फ्रेट कॉरिडोर जी, ये बनाने की भी बात की जा रही है। तो इससे मेरे को लगता है कि बूम पूरा हेल्थ केयर हो या टूरिज्म सेक्टर हो या लॉजिस्टिक हो, इन सब में अच्छी खासी डिमांड आएगी। और इवन साथ में होटल्स की डिमांड भी आएगी, हॉस्पिटैलिटी की डिमांड आएगी, वेयर हाउसेस की डिमांड आएगी। ये ओवरऑल सभी सेक्टर्स को इसमें इम्पैक्ट होगा और सबका विन विन सिचुएशन में यहाँ मुझे रहते दिख रहे हैं। ओके सर। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। कहा जा रहा है कि इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी टू सिलीगुड़ी, इसको भी डेवलप करने की बात कही जाएगी। तो इन सेक्टर्स में भी सर का कहना है कि यहाँ जो है रियल एस्टेट सेक्टर को है जो अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको या ऐलान जो है वो होता हुआ दिखेगा। इंफ्रा पर जो बड़े खर्च की बात कही जा रही थी, जो अभी हम लोग एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपसे भी पूछ रहे थे कि पहले जो था पिछले साल 11.2 लाख करोड़ के आसपास का जो है आवंटन किया गया था, अब जो है 12.2 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स जो है वो तय किया गया है। इसके अलावा भी और तमाम सेक्टर्स को लेकर, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कहा गया है कि भारत अपना जो है सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। तो जिन 6 क्षेत्रों पर जो है सरकार का फोकस रहा है वो एक है रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जिसको अजय दुआ साहब भी कहते हुए दिख रहे थे कि नए और जो है जरूरी क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन की जो क्षमता उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पुराने उद्योग जो पुराने बंद पड़ चुके हैं या जो अच्छे जो है स्पीड पिसअप नहीं कर पाए हैं, उनको जो है दोबारा जीवित करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली अगर बजट के 3 मुख्य विजन को देखें तो रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, अपनी क्षमता को बढ़ाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास होगा। हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के जो है पर्याप्त संसाधन है और जो है मौके हैं, ऐसे भी जो है हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर का रुख करेंगे, रियल एस्टेट पर तो बात होगी ही,
लेकिन उसके बाद जो है सर, जो आपने टेम्पल वाली बात कही कि टेम्पल सिटीज की बात कर रहे हैं आप, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब से मोदी सरकार आई थी उन्होंने कहा कि जो है अपने अंदर ही जो है, देश के अंदर ही जो कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब कैसे कंजम्पशन बूस्ट होगा, जैसे आपने देखा इंडिया यूएस ट्रेड डील ना होने की वजह से हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से जो एक्सपोर्टर्स पर जो मार पड़ा, उसके लिए कहा गया कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि यहीं से कंजम्पशन जो है हम लोग देखने को मिले। और टेम्पल वाली जो आपने बात कही सर, तो कई जगह है जो हमारे जो है पिलग्रिमेज जो है उनको जो है कॉरिडोर बनाने की बात कही जाए, जैसे वाराणसी में देखिए वहाँ भी कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, तो उनके आसपास के क्षेत्रों में जो विकास बढ़ाने की बात है, क्या आप उसी बात को दोहराना चाह रहे थे? देखिए विशाल जी, टेम्पल सिटी सिर्फ टेम्पल सिटी तक नहीं है, सिर्फ अयोध्या नहीं है जी, या सिर्फ वाराणसी नहीं है, या सिर्फ वृंदावन नहीं है। अब आप देखो ध्यान से अगर, तो पूरे यूपी के अंदर या ऐसी जहां भी प्लानिंग कर रही है उसको सभी जगह से कनेक्टिविटी दी जा रही है। मतलब इंफ्रा को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो इतना इंफ्रा डेवलपमेंट है जो शायद पिछले कभी नहीं हुआ था। तो आपस में सबकी कनेक्टिविटी, जिससे कि लोग स्मूथली वहां पहुंच जाएं। रेलवे को वहां बढ़ावा देना, एयरपोर्ट का वहां खुलना, तो लोगों का कम्यूट आसान हो पाए, लोग वहां इजीली पहुंच के जा पाए, मतलब ट्रेवल इजी हो जाए, इसकी कोशिश की गई है। जब लोग आएंगे तो एक टेम्पल अपने आप में आसपास, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 70-80 किलोमीटर की इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत बड़े टेम्पल्स ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अयोध्या एक उभरता हुआ टेम्पल है। यहाँ आसपास उस तरह की इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाइए तो अयोध्या में वो बात नहीं थी, लेकिन आज आप जाके देखिए हर जगह नए रोड्स बन रहे हैं, और मैं तो कहूँगा पूरे शहर को ही नया बनाया जा रहा है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट जब होगा तो लोग वहां आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और जो लोग आएंगे वहां रहेंगे तो वहां खरीदारी भी होगी, हर चीज की खरीदारी होगी, तो इकोनॉमी पूरी डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट का नए टेम्पल सिटीज पे फोकस भी इसके अंदर दिख रहा है। जी, अब सर आप चूंकि रियल एस्टेट के जानकार हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि रेरा का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, अब रेरा से आपकी क्या चीजें आसान हुई या मुश्किलें हुई, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे रेरा के आने से। देखिए विशाल जी, आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया। रेरा, ये फैक्ट है कि होम बायर्स के लिए बना है, और रेरा के अंदर फैसले भी जो आ रहे हैं वो थोड़े क्विक आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्विक उतना नहीं है जितने की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। और सबसे बड़ा जो दिक्कत मैं फेस कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे रियल एस्टेट मार्केट का जो एक विश्वास था, उसके ऊपर बायर्स का जो विश्वास बना था, वो धीरे धीरे उसमें कम होता जा रहा है। और जो एग्जीक्यूशन पावर है रेरा की, जो रेरा के पास अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की पावर होनी चाहिए थी, उसमें कहीं हद तक कमी दिख रही है। इससे कारण रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये जो पॉजिटिव चीज हुई थी, अगर इसे सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो ये नेगेटिव की तरफ भी चीजें बढ़ सकती है। चलिए प्रदीप सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला मनी 9 के लिए, और तमाम बातों को जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश, चाहे वो रियल एस्टेट के हो या ओवरऑल बजट पर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विशाल। तो चलिए, ये रहा अपडेट रियल एस्टेट का, लेकिन बजट में क्या क्या ऐलान किए गए हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि कैंसर की 17 दवाइयां जो है उनको जो है कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स और 7 हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। अब बजट की जो 7 सबसे बड़ी जो घोषणाएं हैं उनसे हम आपको जो है रूबरू करवा देते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया जाएगा, यानी अब जो है 31 दिसंबर के बदले जो है 31 मार्च तक जो है आप रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी का नाम सामने आ रहा है। कैंसर की जो है 17 दवाओं पर से जो है आयात का जो शुल्क है वो हटाया गया है। 7 जो है दुर्लभ जो दवाइयां हैं, यानी जो बीमारियां हैं, माफ कीजिएगा, उनकी जो दवाइयां हैं उनको जो है ड्यूटी फ्री किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर को भी, हालांकि हेल्थ सेक्टर को लेकर और भी कई बातें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि आयुष्मान भारत योजना की जो हायर एज की जो कैपिंग है उसको कम करने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि 70+ जो है लोग उनको जो है कवर करने की बात थी, उस एज को जो है नीचे घटाने की बात कही जा रही थी। यानी कहा जा रहा था कि अब मान लीजिए 60+ अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको भी काइंडली जो है आयुष्मान भारत योजना में जो है आप जोड़ पाइए। अब इस वीक हमारे साथ जो है 2 अहम गेस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अमन ढल साहब जुड़ चुके हैं और मनोज लांबा सर। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया मनी 9 पर।
जी सबसे पहले अमन सर आपका रुख करना चाहेंगे। बजट जो है आप लोगों ने देखा, सुना, समझा, क्या इट वाज मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस या कुछ छूट गया सर? आई थिंक टू अर्ली टू से, कुछ भी कहना अभी ना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब तक एक बार डिटेल फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा जाता तब तक कह नहीं सकते। डायरेक्शनली अगर आप देखोगे तो क्रिएटर इकोनॉमी की तरफ रुझान है, युवा के साथ डिज़ाइन स्कूल और ये क्रिएटर वाला जो पूरा अनाउंसमेंट है उसकी तरफ रुझान है। अगर आप एआई की तरफ देखोगे, कॉशियस अप्रोच है और उसके अंदर लिखा है कि इम्पैक्ट स्टडी करा जाएगा एआई का सर्विसेज सेक्टर पे ऊपर। तो और अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग जो अर्थ कॉरिडोर का अनाउंसमेंट है, तो बड़े इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स हैं, बट इनको पढ़ना पड़ेगा अभी ढंग से। चाहे वो बायबैक के अराउंड टैक्स लगाया गया है, वो कैसे होगा। मुझे हमेशा लगता है कि हमारे देश में बहुत टैक्सेशन है और मल्टीपल तरीके से टैक्सेशन है। टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए। पर्सनल टैक्स में कुछ चेंज नहीं हुआ, वो आई थिंक कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका था पिछले 1-2 सालों के अंदर। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि जब तक फाइन प्रिंट नहीं पढ़ता मैं, तब तक मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन अमन सर लेकिन एक फ्रंट पर जो है बहुत निराशा हाथ लगी। एसटीटी के फ्रंट पर जो मार्केट कयास लगा रहा था कि एसटीटी को लेकर जो है इस बार जो है सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है, उसकी दरों को जो है कम किया जा सकता है, लेकिन इसके उलट जो है एसटीटी का जो रेट बढ़ा देना है, उसके बाद जो देखिए मार्केट जो है एकदम ऊपर से अपसाइड डाउन हो गया, 25,100 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, 200 अंकों की गिरावट है। ये जो पॉजिटिव उम्मीद लगाए बैठा था जो देश का आम रिटेल निवेशक, उसको झटका लगा है सर। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी ही मार्केट को लेके सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। अगर आप बाहर की इकोनॉमीज देखोगे स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। और अगर अभी जो हम देखेंगे जो एफटीए भी हुआ है यूरोप के साथ, दीज आर पॉजिटिव साइंस। तो एक रिटेल को लेके जो एसटीटी लगाना है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। तो बट मैं बोलूँगा कि अभी ये लग रहा है कि ऐसा है, बट मुझे नहीं लगता इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म में। ओके सर, अब मनु सर का हम रुख करेंगे। मनु सर, ओवर टू यू। असल इनकम टैक्स के फ्रंट पर सर निराशा हाथ लगी। वहां भी कहा जा रहा था, प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशंस को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा था, पीएचडी सीसीआई से लेकर तमाम जितने भी जो स्टेक होल्डर्स थे वो कह रहे थे कि अब इस लिमिट को भी बढ़ाने की जरूरत है। अब जो है थोड़ा कमाई बढ़ रहा है तो जो है टैक्स की जो देनदारी है वो थोड़ा कम कर दे सरकार। सर उस फ्रंट पर जो है निराशा हाथ लगी है। मोदी सरकार ने जो है इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। आप सर चूंकि सीए हैं, एक्सपर्ट है, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? सर मैंने प्री बजट एक्सपेक्टेशंस में ही कहा था, आपके चैनल पे ही कहा था कि इस बजट में आपको बहुत ज्यादा स्लैब में बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बजट में ही 12 लाख रुपए तक की इनकम को कर मुक्त कर दिया गया था। ऐसी भारत में व्यवस्था हो गई थी पहले ही कि 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना है। तो पहले से ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार टैक्स फ्रंट्स को लेके कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें हमने बजट एक्सपेक्टेशंस में डिस्कस की थी आपके चैनल पे ही, उसमें से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस मान ली गई हैं। मैंने बात की थी कि एसटीटी बढ़ाया जाएगा एफएनओ पर, और उसी तर्ज पर एफएनओ पर आपको एसटीटी में बढ़ाई हुई दरें देखने को मिली हैं, जिसको अब बाजार आखिर भी दिखा रहा है। आपने देखा बाजार एकदम से पैनिक हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफएनओ में रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा लगता है उसमें से 93% इन्वेस्टर लॉस करते हैं सर। और रिटेल इन्वेस्टर से सरकार चाहती है कि एफएनओ से दूर रहे। और जहां तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात है, बैंक्स की बात है और बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस की बात है, उनके लिए जस्ट ए पैनिक है। अगर उन्हें बाजार में निवेशित रहना है तो वो रहेंगे। इस मामूली से एसटीटी बदलाव से कुछ नहीं है, ये पैनिक सेलिंग हो रही है। बड़ी जल्दी आप बाजार में एक अच्छी और स्पीड रिकवरी देख रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है उन्हें मैं कहूंगा कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। ओके, अब अमन सर आपका रुख करना चाहेंगे। आप एसटीटी के फ्रंट पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं? मनोज जी ने बहुत अच्छा बोला, जो मैं एक्चुअली कहना भी चाह रहा था। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। वो तो कह रहे हैं सर कि उन्होंने तो प्रीएम्प्ट कर लिया था। नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि घटाएंगे, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि बढ़ाएंगे।
बट उनका जो एनालिसिस है बिल्कुल स्पॉट ऑन है। मुझे नहीं लगता इसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होगा, एंड ही इज़ वेरी राइट दैट रिटेल पीपल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ लॉसेस इन एफ एंड ओ। तो सरकार नहीं चाहती कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो ये एक अच्छा ही साइन है ओवरऑल। और कॉर्पोरेट और जो लार्जर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक मामूली सा एक टैक्स हाइक है, और ये आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म दे विल टेक इनटू डू देयर स्ट्राइड। ओके, बट सर इकोनॉमिक सर्वे का मैं रुख करना चाहूँगा, और जिस तरह से उसमें भी एक बात कही गई कि जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं और जिस तरह से अनसर्टेनिटीज़ एट इट्स कोर, मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि देखिए इस साल की जो शुरुआत हुई है लग नहीं रहा था कि मतलब सब कुछ लग रहा था कि सही सा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से फिर ईरान वाला मामला आ गया सर, वेनेजुएला वाला मामला आ गया, उसके बाद आप देखिए कि सिल्वर और गोल्ड की जो कीमतें हैं उसमें भी जो है अब ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आप सिल्वर की तो प्राइसेस में अगर मैं बात करूं तो सर 1980 की बात कही जा रही थी कि उस समय का जो है ज़बरदस्त जो गिरावट देखने को मिल रहा था, 90% की गिरावट आ रही थी। अब भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, 1/3 अगर मैं कहूं तो 30% की गिरावट आई थी सिल्वर में, और आज भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि तमाम फैक्टर्स को, जियो पॉलिटिकल टेंशंस को, इसको ये आप कैसे देख रहे हैं फॉर द मार्केट्स? सर देखिए, ओवरऑल जो ये हमेशा मैं बोलता जियोपॉलिटिकल हूँ कि टेंशन चल रही है, आपको एक कोई भी अमन चीज सर, है आपसे उसमें जो सवाल है, बढ़ाओ उसके बाद मनोज सर आपसे घटाओ। चलेंगे। अमन सर। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, ट्रम्प टैरिफ वार चल रही है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा अगेन जो ये कमोडिटी में फॉल आया, आपने पिछले दिनों में देखा कि सोना और चांदी बहुत सारे लोगों को माला माल कर गया। जब माला माल हुए थे तब कोई चिंता नहीं कर रहा था कि किस लेवल पे जाएगा, चांदी कहाँ पहुंचेगी। तब चांदी को बताया जा रहा था कि एक नई मेटल है, नया खजाना हाथ लगने वाला है। लेकिन जब फॉल आई, एक दिन के फॉल ने बाजार को हिला दिया। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार का ये बजट आज का बजट नहीं है, 2047 के विकसित भारत का बजट है, जहां पर सरकार ने जितने भी चेंजेस किए हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलने वाले बजट है। तो ये फॉल अगेन सोने चांदी में जितना भी नुकसान हो रहा है, अगेन जिन लोगों ने शादी ब्याह के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए सोने चांदी में निवेश करना है, उनको एक अच्छा अवसर दे रहा है निवेश करने के लिए। दूसरी चीज मैं इसमें जो बताना चाहता हूं, ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट है, ये एस्पिरेशन ऑफ पीपल का बजट है, ये हब का हाथ, हब का विकास, सरकार का प्रयास का बजट है। और सरकार ने सभी के लिए बात की है। अगर इस बजट पे आप देखें, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज की बात हुई है, टेक सपोर्ट्स की बात हुई है, स्टार्टअप्स की बात हुई है, और एमएसएमई जो भारत को विकसित बनाने के लिए 2047 तक हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा ऐलान सर, इक्विटी सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपया हमारी एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया, 4,000 करोड़ रुपए का सेल्फ रिलायंट फंड बनाया गया फॉर रिस्क कैपिटल, और लिक्विडिटी सपोर्ट्स के लिए ट्रेड्स के बदलाव किए गए हैं। एमएसएमई बाय सीपीएसटी जितना भी होगा उन पे ट्रेड्स के प्रोविजन लागू होंगे। सीजीटी में स्कीम फॉर इनवाइस डिस्काउंटिंग लाई गई है, जेम को लिंक के साथ किया गया है, ट्रेड्स के साथ लिंक किया गया है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट बैक सिक्योरिटी के रूप में माना जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो नए भारत के व्यवसाय की नींव रखेगा, सरकार ने पूरे भारत में कॉर्पोरेट मित्रा बनाने की बात की है, और जिसके लिए वो 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो हिंदुस्तान के हैं, आईसीएआई, आईसीएएमएआई और आईसीएसआई के सहयोग से शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च करेगा युवाओं के लिए कि बिजनेस कैसे करना है, कंपनी कैसे सेटअप करनी है, क्या सब्सिडीज हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या योजनाएं हैं, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रेड्स पे कैसे जाया जा सकता है, एसएमई आईपीओ का कैसे फायदा उड़ा रहा है। तो ये जो कॉर्पोरेट मित्रा की कंसेप्ट है, तो जो कंसल्टेंट कॉर्पोरेट मित्रा बनेंगे वो नव भारत निर्माण के नए बिजनेस करने के ढंग की एक नींव रखेंगे। ये सरकार का वेलकम स्टेप्स हैं। और आज के बजट में आपने सुना कि एआई को लेके भी बहुत सारे ऐलान हुए। तो आने वाले दिनों अभी एक बहुत बड़ा समिट भी हो रहा है, एआई समिट 2026 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, जिसमें आप एआई को लेके और बड़े ऐलान भी सुन सकते हैं। तो ये सभी जो बजट है, ये आज का बजट नहीं है, ये विकसित भारत का बजट है, जिसमें सरकार ने एक मैं कहूंगा दूरदर्शी उद्देश्य रखकर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास भी किए हैं, और ये सारे बजट से जनता है। और दूसरा, सरकार अब
ये नहीं चाहती कि एक मेरा व्यापारी अगर छोटा सा नॉन कंप्लायंस हो जाता है तो उसे जेल जाना पड़े। ये मैंने उसमें ही आपके चैनल से बड़े जोर शोर से बोला था कि डीक्रिमिनलाइजेशन जारी रहेगा, ओके, प्रोसिक्यूशन खत्म होगा। और सरकार ने आपने देखा पूरे इनकम टैक्स से आज बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी और कस्टम्स में भी डीक्रिमिनलाइज कर दिए हैं, जहां पर पेनल्टी नहीं होगी, पेनल्टी के नाम पर छोटी सी फीस होगी और सजा के नाम पर छोटा सा जुर्माना होगा। तो सरकार ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस देना चाह रही है, ईज ऑफ लिविंग ऑफ बिजनेस देना चाह रही है। उस बिजनेसमैन को पूछिए जिसको झंझटों से जूझना पड़ता है। और एक अच्छी बात, अगर आप अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ऑडिट नहीं करा पाते हैं, तो वहां पर पेनल्टी की जगह हर फीस लगेगी। ओके, अब मनु सर की तो बात हम लोगों ने सुन ली है, लेकिन अब हमारे साथ अमन सर है। अमन सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, और चांदी और सिल्वर की मैं बात कर रहा था, माफ कीजिएगा चांदी और गोल्ड की मैं बात कर रहा था। तो चांदी जो है 2 दिन में सर 1.36 लाख जो है वो सस्ती होती हुई दिख रही है। आज जो सोना की बात की जाए, गोल्ड की बात की जाए, तो 31,000 सस्ता होकर आज जो है, आज का अगर करंट भाव में बताऊं तो 1,38,000 रुपये हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है सर, या कोई और बड़ी वजह है? देखिए, मार्केट्स में हमेशा जियोपॉलिटिकल रीजन हो जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजन, जिसकी वजह से ये एकदम जो चढ़ाव और नीचे आता है, ये होता रहता है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा देखना है, किसी भी मेटल है, चाहे स्टॉक है, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, आपको एक लंबे अवधि में आपको देखना पड़ता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 3 साल में आपको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल बढ़िया है। एक करेक्शन की तरह मानिए, मतलब जिस तरह बढ़ा उसी तरीके से नीचे आया है जो हुआ है। सो कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी ऊपर जाती है वो अनसस्टेनेबल होती है, मैं हमेशा मानता हूँ। तो मैं इसको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ट्रेजेक्ट्री आगे ही रहेगी। एक करेक्शन मान लो, कुछ व्हाटएवर शॉर्ट टर्म फोर्सेस जो भी एक पीछे से काम कर रही थी, हमें बाद में हमेशा पता भी लगा है कभी कभी हाउ मार्केट्स आर ऑल्सो स्पूक्ड, पीछे से कैसे धांधलेबाजियां हो जाती हैं, कभी कभी पता नहीं लगता है। तो जितनी तेजी से ऊपर आते हो, एक करेक्शन सा ही मानूंगा मैं इसको, बट लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। ओवरऑल बजट को मैं अगर देखूं तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव साइंस ही है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफ़ी फोकस रहा है। इवन लाइक अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स की साइड धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं, और आई फील दैट एक जो इकोनॉमी है जो डेवलप्ड होने की तरफ चलती है, तो स्पोर्ट्स और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी की। तो उस तरफ अगर आप देखोगे तो सरकार समझ रही है कि स्पोर्ट्स गुड्स को अफोर्डेबल करना ज़रूरी है। खेलो इंडिया को खेलो मिशन बना दिया गया है, और उसके अंदर और चीज़ें डाल दी गई हैं। इवन ऑन द हेल्थ केयर साइड नए एम्स की बात हो रही है, और जो ड्यूटी कट अनाउंस हुआ है, विच आर गुड साइंस। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जब रुझान होता है तो सरकार और टैक्स को रैशनलाइज करा जाता है, तब आप एक्चुअली विकसित भारत की तरफ रुझान करते हैं। ओके, मनोज सर, हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन रिवाइज जो है रिटर्न फाइल करने के लिए जो है 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है। यानी इसको अगर आसान भाषा में समझे सर, तो 31 दिसंबर के बदले जो है 31 मार्च तक जो है रिवाइज रिटर्न जो है फाइल आप कर सकते हैं। इस मामले को हमारे व्यूवर्स को जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाइए इस कदम को। सर, मैंने पहले ही कहा कि ये ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस के लिए बजट है। सरकार ये नहीं चाहती कि अब 31 दिसंबर तक अगर किसी ने रिटर्न नहीं भरी तो उसको मौका ही ना दिया जाए। पहले क्या होता था, इस साल की रिटर्न का उदाहरण लीजिए, कोई लोग 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भर पाए तो वो रिवाइज करने की उनके पास ऑप्शन नहीं थी। तो सरकार अब 3 महीने और दे रही है आपको रिवीजन करने के लिए। इसके लिए आपको छोटा सा कोई जुर्माना नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, छोटी सी 10% की एक्स्ट्रा फीस लगाई जाएगी। दूसरी चीज अगर मैं बताना चाहता हूं, अपडेटेड रिटर्न पहले 2 साल तक भरी जा सकती थी, पिछले साल बजट में 4 साल तक की गई थी, और आज मोदी जी ने एक बहुत अच्छा बदलाव और कर दिया इसमें यह है कि अगर आपको रीअसेसमेंट, आपकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो गई है, आपका स्क्रूटनी में केस दोबारा लग गया है, आपकी सरकार रीअसेसमेंट कर रही है, और रीअसेसमेंट का नोटिस भी आपको आ गया है, और आप चाहते हैं कि अब मैं अपनी रिटर्न अपडेट कर दूं, पहले ये रिटर्न नहीं कर सकते थे। तो सरकार इतना विश्वास कर रही है अपने करदाता में कि केस 4 साल बाद फिक्स हो रहा है, 4 साल तक आपने रिटर्न नहीं भरी
और उसके बाद केस फिक्स कर दिया सरकार ने, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और अब आप कहते हैं कि मैं अपनी इनकम रिवाइज करना चाहता हूं, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, तो सरकार ऐसे लोगों पर भी विश्वास कर कर उन्हें मौका दे रही है दोबारा रिटर्न भरने का। तो ये विकसित भारत का बजट है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये जो वेलकम सुधार हुए, बहुत सारे सुधार ऐसे हैं, ऐसे कि नहीं स्लैब रेट नहीं बदला गया। अगर आप इनकम टैक्स का फाइनेंस बिल पढ़ेंगे सर, तो ये जो फाइनेंस बिल आया है 232 पेज का है, मेमोरेंडम 100 पेज का है, 332 पेज में सरकार ने समझाया है कि इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव हुए सर। ओके सर, एक और बात है जो निकलना है, थोड़ी सी लूंगा, तो आपने मेरे को मौका दिया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मनु सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी अमन सर, चूंकि अब टैक्स की बात हो रही है, चूंकि आप भी टैक्स वाले मामले को अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं, सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को जो है इनकम टैक्स में जो है वो छूट दी गई है। इस मामले को अगर हम आपसे समझना चाहें सर, इसके अलावा ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर जो है 5% की जगह जो है कहा जा रहा है कि 2% टैक्स किया गया है। इन कदमों से क्या आप रिफॉर्म्स की गाड़ी जो है आगे बढ़ते हुए देखेंगे? बिल्कुल। थिंक जो सरकार है टैक्सेस को लेकर, ऑब्वियसली उनको देखना है कहाँ से पैसे कमाना है और कहाँ से रिफॉर्म्स ला सकते हैं और कहाँ से हमारी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्लियरली साइंस है रिफॉर्म्स के। मैं यही बोलूँगा, आई एम नॉट सरप्राइज ये जो स्टेटमेंट, बड़ा मैं हमेशा ओवरऑल एक मैक्रो लेवल पर देखूंगा कि अगर हम आगे चल के टैक्स को और सिंप्लीफाई करें, जो आई थिंक बीजेपी का इनिशियल वो भी था कि वन टैक्स, आई थिंक अगर हम उस डायरेक्शन में जाएं आगे चल के, और जो मुझे लगता है जाएंगे जिस तरीके से ये जो मेजर्स हैं, ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी, तो मुझे लगता है वो बेस्ट होगा। क्योंकि जो आम आदमी है उसको हमेशा होता है कि सिंप्लीफिकेशन रहे, मेरे पे 100 रुपए हैं और अंत में एक्चुअली मुझे कितना टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत है हमारे देश के अंदर, वो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट, मैं बोलूँगा। बाकी ये जो है मेजर्स मोटर साइड पे हो, कुछ भी हो, ये अगेन ऑल पार्ट एंड पार्सल है। ओके इसके अलावा एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पर जो है 5% की जगह 2% टैक्स किया गया है। एम्प्लॉयज़ जो है हायरिंग सर्विसेज पर 1 से 2% टैक्स होगा, और 20 लाख रुपए से कम की अगर जो विदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। ऐसी बातें भी सामने आ रही है। अब चूंकि हमारे साथ जो है एंजल इन्वेस्टर्स आप जुड़े हुए हैं, अच्छी जानकारी आप रखते हैं सर। अब आपसे समझना चाहेंगे आईटी सेक्टर और नौकरियों के फ्रंट पर जो है एक समस्या रहती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, 47 तक हम लोग जो है डेवलप्ड हो जाएंगे डेवलपिंग से। इसके अलावा सर एक चिंता की बात ये रही, इस साल अगर आप देखिए ट्रैक करिए तो आईटी कंपनियों के जो हालत खस्ते रहे। आज जितनी नौकरियां ये देने वाले पहले बना करते थे, अब उतनी ही आफत आती हुई दिख रही है। मेरे पास एक डेटा है सर कि जो भारत की 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां हैं, जो दशकों तक कहा करती थी कि हर तिमाही जो है हजारों नौकरियां हम देते हैं, लेकिन उन्होंने 2025 के पहले 9 महीने में कुल मिलाकर सिर्फ 17 कर्मचारियों को जो है ऐड किया, यानी बढ़ोतरी। क्योंकि इसके बड़े कारण ये बताया गया, जितने हायर किए उससे ज्यादा इन्होंने फायर कर दिया। इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? क्या यूएस का हायर एक्ट को लेकर एक जो है असमंजस थी, H1B वीजा को लेकर असमंजस था, या जो आईटी को लेकर जो इतनी जो है अनसर्टेनिटीज है, वो एक बड़ी फैक्टर है? अनसर्टेनिटीज हैं, एआई जो आया है उसकी वजह से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। ठीक है, जितना आपको पहले लोग चाहिए थे उस तरीके के लोग नहीं चाहिए। इनफैक्ट क्या हो रहा है कि रोल बदल रहे हैं, तो रोल बदल रहे हैं तो एंड एवरीवन इज अनसर्टेन कि ये अभी कहाँ जाएगा एआई, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो उसको एक्चुअली एवरीवन इज स्टडिंग। मैं बोलूँगा कि अभी उतनी हायरिंग नहीं हो रही, बट क्या हो रहा है, रोल्स बदल रहे हैं, और उस रोल्स जो बदल रहे हैं उसके लिए क्या लोग रेडी हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेडी हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो स्किल सेट है हमारे युवा के पास जो एक्चुअली कंपनीज को चाहिए? आई थिंक बहुत कम लोगों के पास है। वहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे फास्ट मैं बोलूँगा अपडेशन की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक ऑब्वियसली ग्लोबली हो रहा है, ये इंडिया में नहीं हो रहा, बट इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि हम हमेशा से एक जीसीसी रहे हैं और वो बढ़ रहा था काफ़ी तेज तरीके से। तो जो कंपनीज हैं वो अनसर्टेन है, एंड इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रही हैं क्लियर, और इसी वजह से ये सब हो रहा है।
ओके अब सर एक और कुछ जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पर भी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे, जिसको जो है रेखांकित किया गया था, हाईलाइट किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में भी। कहा गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो है समस्या अभी भी बदस्तूर जारी है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है सर, हाउ इंडिया इकोनॉमी वर्क्स, पॉडकास्ट था, इसमें जो है जेपी मॉर्गन के जहांगीर अजीज साहब, इनका एक कोट है सर, बड़ा रोचक कोट है। कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट निवेश जो है 2012 से ठहरा हुआ है और जीडीपी के जो करीब है 12% पर ही अटका हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है सर कि 1 साल 2 साल की समस्या है, इट्स अ प्रोलॉन्ग जो है प्रॉब्लम है। आप कैसे देख रहे हैं सर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ना आना, जबकि हम लोग सर इस बजट में भी सुन रहे हैं कि जो है सरकार अपने केपेक्स में बढ़ोतरी का ऐलान कर रही है, 12.2 लाख करोड़ के आसपास का खर्च होगा, लेकिन सरकार के पैसों के दम पर कितने दिन जो है हम लोग इकोनॉमी को जो है रफ्तार देते हुए नजर आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आगे का जो टाइम है वो स्किल इकोनॉमी का है। जिसके पास स्किल्स होंगे वही इकोनॉमी बढ़ेगी। सो अगर भारत वो स्किल्स शोकेस कर पाएगा, इसी वजह से हमारे जो लोग थे ग्लोबली, आप देखो सीनियर रोल्स के अंदर हैं, वो लोग बाहर गए, अच्छा किया और देश का नाम रोशन किया, और उसी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत काम आया। तो वही स्किल सेट हमें आगे लेके जाएगा। मेरा मानना है, क्या हम आज के युवा को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं? तो वो स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट है और उसी से सब कुछ लिंक्ड है। ये जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे सरकार की हो चाहे प्राइवेट की हो, मुझे लगता है अगली वॉर स्किल्स की है। जिसके पास स्किल्स होंगे वो देश आगे जाएगा। ओके सर, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अब हम लोग और कुछ चर्चा कर लेते हैं सर। इसमें जो है फिस्कल डेफिसिट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट जो है 2026-27 में जो राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में ये 4.4%, यानी हल्के जो है घाटे जो है उसमें कमी आई थी। इस फ्रंट पर सर आप कैसे देख रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट वाले जो नंबर्स है बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं, आगे का भी प्रोजेक्शन कहा जा रहा है। हाँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ तो मैं उस पर मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, ठीक है, मैं ठीक है अपने सर, ही ठीक है, जो मेरे ठीक एरिया है, है उसी पे ठीक है। तो फोकस मार्केट पर भी हम लोग सर, मार्केट पर ही हम लोग नजर रखते हैं। मार्केट में जो सडन जो है एक डिप आया था, उसके बाद जो है अच्छी खासी रिकवरी देख निचले स्तर से आ रही है। अगर लोज की बात की जाए तो 24,571 का लो था और अभी जो है निफ्टी जो है 25,109 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब सर चूंकि मार्केट का सवाल हम लोग ले रहे हैं तो सर एक समस्या यहाँ मार्केट को ये रहती है कि स्मॉल कैप मिड कैप का जो सेक्टर है उसमें जो है अभी भी जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं। स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर पिछले साल भी बातें आ रही थी कि कहा जा रहा था, उस समय भी कई लोग कह रहे थे कि फ्रॉथ हो गया है, बबल हो गया है, अभी थोड़ा सा पैसा निकाल लीजिए। एसआईपी में भी अगर आपका जो है पैसा लगा हुआ है और इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो वहां भी थोड़ी चिंताजनक बात है। स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर आपकी क्या राय है? मैं सिंपल बोलूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल कैप मिड कैप, हम किसी भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं, पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, मैं एक सिंपल चीज़ बोलूंगा कि हमें डायरेक्शन देखना है। हम सेक्टर्स की क्या बात कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एसएमई आईपीओज आ रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप, एवरीवन इज एक्चुअली फेसिंग अ स्किल शॉर्टेज, ठीक है। मुझे लगता है ये क्लैरिटी और 1-2 सालों के अंदर आएगी कि एआई हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, टेक्नोलॉजी हमें किस डायरेक्शन में है। प्लस क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। आपके जो स्मॉल और मिड कैप वाले स्टॉक्स से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, या तो बहुत चढ़ेंगे या फिर बहुत नीचे जाएंगे। तो एक बहुत डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट है स्मॉल कैप और मिड कैप पे, जब तक ये जियोपॉलिटिकल एआई एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड क्लैरिटी नहीं आती। लार्जर कंपनीज, they have been through that journey, they will remain the most stable. ओके सर, तो ऐसे समय में आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो हैं बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तो सर ऐसे समय में पोर्टफोलियो को किस तरह से जो है अपना बनाना चाहिए, इस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे। देखिए आपसे जो हम लोगों ने चर्चा कर ली सिल्वर गोल्ड पर, कमोडिटीज़ पर, मार्केट्स पर कर ली चर्चा। चूँकि बॉन्ड्स वॉन्ड्स वाला भी मामला है तो वो हम आपसे समझना चाहेंगे। तो एक ओवरऑल पिक्चर समझा दीजिए सर, चूँकि अब हम लोग को शो को वाइंड अप भी करना है, तो आपसे समझना चाहेंगे सर पोर्टफोलियो कैसा बना है। मुझे लगता है पोर्टफोलियो वहां बनाए जहां आपको लगता है फ्यूचर है, और फ्यूचर मुझे लगता है एजुकेशन में है, ठीक है। जहां पे उस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट होगी जो एक्चुअली फ्यूचर है, वहां पर आप लगाएं, ठीक है। उस तरीके के एजुकेशन स्टॉक्स के अंदर लगाएं। मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं जा रही, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर है। आपको सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। कहाँ पे कंजम्पशन रहेगा, उन सेक्टर्स के अंदर आप पैसा लगाएं, ठीक है।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप होना है इस देश के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स विद इन दैट अगेन। सो आपको ये देखना है कि अगले 10 साल 15 साल का हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आने वाला टाइम हम इन्हीं चीज़ों का है। तो आपको उन्हीं उन्हीं जगहों पे देखना है जहाँ पे आपको फ्यूचर दिख रहा है इस भारत का। वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि एज ओल्ड लेगेसी थिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब इवॉल्व करेंगी। तो वो जो इवॉल्व होंगी, आपको आपको देखना है कि वो जो इवॉल्व होंगी, क्या वो कंपनीज उस तरीके से इवॉल्व हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी बियॉन्ड द बैलेंस शीट्स। आने वाला टाइम अगेन, हम कार्स की बात करते हैं, हम मोटर बाइक्स की बात करें कि आगे पॉड्स आने वाले हैं, व्हाटएवर। तो उस तरीके से आपको अगले 10-15 साल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, आई विल से दैट। चलिए अमन सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये था ताज़ा तरीन अपडेट। अब बजट को लेकर और क्या क्या बातें सामने आई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने जो है डिकोड करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कैंसर की 17 दवाइयाँ जो हैं वो कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 3 आयुर्वेदिक जो है एम्स और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात कही जा रही है। और मार्केट्स जो है, चूंकि एसटीटी में जो है थोड़ी बढ़ोतरी कर दी गई, उसके बाद जो है मार्केट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बारीकी से लिंक्ड होते हैं बजट को लेकर, तो वहाँ जो है गिरावट जो है वो गहराती हुई नज़र आ रही है। अब 25,050 का भी जो है साइकोलॉजिकल लेवल आप कहिए, उसके भी नीचे जाकर हम लोग कामकाज करते हुए दिख रहे हैं और 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक का क्या हाल है वो भी हम आपको बता देते हैं। 58,834 के आसपास कारोबार हो रहा है। 790 अंकों की यहाँ भी गिरावट आती हुई दिख रही है। सोने चांदी का भी क्या अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। 2 दिन में मात्र कहा जा रहा है कि चांदी जो है 1,36,000 रुपये सस्ती हो गई है और ये 2,65,000 के आसपास आ चुकी है। अब इसी मामले पर जो है हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ चुकी हैं, शैली गुप्ता मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। धन्यवाद विशाल जी। मैडम, आपसे सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे। बजट को आपने देखा, सुना, समझा, कैसे देख रही है इस बजट को? क्या आपके अनुमान के हिसाब से रहा बजट जो, और क्या छूट गया मैडम, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो देखने में अब ये बहुत सही बात है कि बजट एक बहुत बैलेंस्ड है इस बार। इनकम टैक्स रेट्स में कोई चेंज आपको भी नहीं दिखे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, बट एक मेजर फायदा जो मेरे को दिखा है इंडिविजुअल्स के लिए, जो हम आजकल काफी नोटिसेस देख रहे थे, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम जो डिस्क्लोज होने से रह गई थी, उसके ऊपर एक स्कीम अनाउंस करी गई है फाइनेंस मिनिस्टर ने। एंड एक विंडो दी है वन टाइम डिस्क्लोजर की, जहाँ पे फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम डिस्क्लोज होने से रह गया है, वहां पे आप खुद डिस्क्लोज करिए, आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलेगी। सो ये एक काफी अच्छा डायरेक्शन है, प्रपोजल है इस बजट में। एंड इससे ब्लैक मनी एक्ट की काफी प्रोसीडिंग्स अवॉइड करी जा सकती हैं छोटे इंडिविजुअल्स के लिए। ओके मैडम, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन जो है रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए जो है 3 महीने का जो ज़्यादा समय दिया गया है, इसको आप कैसे देख रही हैं इनकम टैक्स पेयर्स के फ्रंट पर? इसका डेफिनेटली फायदा होगा सभी के लिए, इंडिविजुअल्स हो या कॉर्पोरेट हो, बिकॉज अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है 31 दिसंबर के बाद अगर आपको करेक्शन करनी है अपडेटेड रिटर्न में, तो वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस में अवेलेबल था और आपको ज्यादा टैक्स पे करना था अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग के लिए। सो अब ये विंडो बढ़ गई है 3 महीने से, तो डेफिनेटली आपको विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा टैक्स आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का। मेरे हिसाब से एटलीस्ट इवन फॉर कॉर्पोरेट्स वो 2 महीने का टाइम काफी कम था कोई मिस्टेक करेक्ट करने के लिए। सो ये डेफिनेटली एक वेलकम चेंज है। ओके मैडम, अब कुछ जो है बड़े ऐलान जो हुए हैं बजट की, उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए 7 हाई स्पीड जो है रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद और हैदराबाद बेंगलुरु, और उसके बाद तमाम जो है लिस्ट जो है लंबी है। इस खबर को आपके चश्मे से कैसे देखें? क्या ये इंफ्रा में पुश लाने की बात कही जा रही है, नौकरियां सृजन होती हुई दिखेंगी, या और क्या क्या जो चैलेंजेस थे वो इनसे दूर होती हुई नजर आएगी? जैसे कि मिनिस्टर ने बोला कि हम 3 कर्तव्य पूरे कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि इस चेन से ये तीनों कर्तव्य अलग अलग तरीके से मीट करे जा सकते हैं। डेफिनेटली इसमें सबका ग्रोथ तो है ही, एक्सेलरेट हो रही है आपकी इंडिया की ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ेगी, कॉर्पोरेट्स के बिजनेस बढ़ेंगे, आपका उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। तो इसको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तरह ना देखकर हमें ये देखना पड़ेगा कि देश का ओवरऑल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल सब इंप्रूव होता है। जी जी मैडम, उसके अलावा आपसे मार्केट पर भी चर्चा करना चाहेंगे मैडम। मार्केट में जो है अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसमें जो है गिरावट आया है। 25,050 के आसपास हम लोग कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट को ये अनुमान लग रहा था प्री बजट में, आपको बात बता रहा हूँ, कि एसटीटी में जो है उसमें जो है कमी की जा सकती है, लेकिन इसके उलट जो है फैसला आता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि एसटीटी में जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद जो है मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं एसटीटी के फ्रंट में? क्योंकि इसके पीछे का एक तर्क ये दिया जा रहा था मैडम कि एफआईआईज की हैवी सेलिंग देखने को मिल रही थी। लोग जो है भारत से जो अपना पैसा निकाल कर जो है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में लगा रहे थे। एक तर्क दिया जा रहा था कि जहां पैसा बनेगा वहीं हम चले जाएंगे। तो इसके लिए एक उपाय ये सोचा गया कि एसटीटी को कम कर दिया जाए। हालांकि इसके पहले वाले बजट में भी ऐसी बातें आ रही थी, एसटीटी कम करिए ताकि जो है एफआईआईज का जो पैसा है वो यहाँ पर रहे, स्थिर रहे। आप कैसे देख रही हैं? अगर इससे क्या एफआईआईज की सेलिंग बढ़ती हुई दिखेगी या मार्केट में और जो है कोहराम मचेगा? ये आप बिल्कुल ठीक आपने नोट करा है कि एसटीटी बढ़ा है आपका। सेल ऑफ ऑप्शन एंड सिक्योरिटीज में 0.1 से 0.15% बढ़ गया है, एंड 1.125 से 0.15% बढ़ गया इंट्रिंसिक प्राइस पे। सो डेफिनेटली ये इंक्रीज है एसटीटी में, एसटीटी कॉस्ट बढ़ रही है। बट आप ये देखिए कि ये जो आप बढ़ावा देख रहे हैं एसटीटी के रेट्स में, ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। और स्पीच में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला है और मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है कि एसटीटी हमारे इकोसिस्टम और पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। लिखा तो उन्होंने सिर्फ यही है कि ये ट्रांसपेरेंट ट्रेडेड ट्रांजैक्शंस दिखाने के लिए है, बट असल में देखा जाए तो ये सिर्फ कलेक्शन इंप्रूवमेंट का ही नतीजा है, और वो ही उनके दिमाग में ये रखा गया है इस इंक्रीज को लेते हुए। ओके मैम, शेयर बायबैक पर भी टैक्स लगने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि शेयर होल्डर को मिलने वाले जो कंसिडरेशन पर डिविडेंड इनकम मानने के बजाय जो है उसको जो है कैपिटल गेन्स हेड के तहत जो है उस पर टैक्स लगेगा। अभी भी प्रस्ताव है कि ये भी प्रस्ताव है मैडम कि प्रोमोटर्स के लिए जो अलग अलग रेट हो, जिसमें बायबैक में जो है वो गेन जो है प्रभावी रेट जो है घरेलू कंपनियां जैसे कि प्रोमोटर्स के लिए जो है 22% और घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य प्रोमोटर्स के लिए 30% होने की बात कही जा रही है। इस शेयर बायबैक वाले मामले को बहुत ही आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए। अगर आप देखेंगे बायबैक की जो स्कीम पहले होती थी, पहले ये कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स होता था। फिर आप पिछले साल इसको बदल के शेयर होल्डरों के हाथ के अंदर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके मैक्सिमम टैक्स रेट पे टैक्स होने लगा था। अब इस बार बायबैक का फ्रेमवर्क फिर से सरकार ने बदला है, एंड अदर देन प्रोमोटर्स को छोड़ के एटलीस्ट फर्स्ट ग्लैंस हमने जो फाइन प्रिंट का देखा है फायदेमंद रहेगा सबके लिए। बट प्रोमोटर्स, ये कहना बिल्कुल सही रहेगा एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग पे कि प्रोमोटर्स इससे हिट होंगे इस अमेंडमेंट के बाद। सो रिलीफ जो है बायबैक की जो चेंज करी है टैक्सेशन रिजीम, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी अदर देन प्रोमोटर्स। ओके मैडम, एमएसएमईज पर भी जोर देने की बात आई है मैडम, जिससे एमएसएमईज को लेकर कहा जा रहा था कि देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। वो सबसे ज्यादा उन पर जो है डेंट पड़ता हुआ दिखा था जब इंडिया यूएस जो है ट्रेड डील नहीं हो पाया था। उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि जो है बहुत सारी नौकरियां गई, गुजरात, सूरत, नोएडा, तमाम जगहों पर कही गई कि जो है फैक्ट्रीज जो बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उनको बंद करना पड़ा, अपने कामगारों को जो है उनको वापस भेजना पड़ गया था। उस फ्रंट को लेकर क्या कुछ खास बातें आई हैं एमएसएमईज को लेकर, एसएमईज को लेकर? तो 3 चीजें कही थी फाइनेंस मिनिस्टर ने। इक्विटी सपोर्ट करेंगे, कुछ 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड अनाउंस किया है। सो कैपिटल सपोर्ट मिलेगा एमएसएमईज को, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक फंड अलग से अप्रूव किया गया है, एंड लिक्विडिटी में सपोर्ट करा है। तो ये तीनों अनाउंसमेंट्स जो करी गई है, ये तीनों दिखाती है कि एमएसएमई को कैपिटल और लिक्विडिटी सपोर्ट सरकार देने के लिए काफी झुकाव दिखाया है सरकार ने। जी,
तो मैडम अब आगे हम और बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की बात कही जा रही है। 15,000 जो है सेकेंडरी स्कूलों को और 500 कॉलेजेस में जो है कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात कही जा रही है। तो चूंकि आप भी जानती हैं मैडम कि पिछले बार भी कई रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जब कहा गया था कि जो हमारे देश के जो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, यानी जो यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, उनको जो है 21,000 करोड़ के आसपास की कमाई हुई थी, यानी यूट्यूब ने उतना पैसा इनको दिया था। इससे जो है इकोनॉमी में तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पैसा आएगा तो वो पैसा सर्कुलेट होगा। इनको और प्रोत्साहित करने वाले इस कदम को आप कैसे देख रही हैं? तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। देखिए, ये एक नया प्रोफेशन क्रिएट हुआ है कुछ सालों पहले। किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्रोफेशन इतना रेम्यूनरेटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि पीछे इनकम टैक्स के मामले में इस प्रोफेशन को लेके एक दिक्कत खड़ी करी गई थी कि इनके पेमेंट्स जो कभी ट्रैक नहीं होते थे, उस पे टीडीएस की एक प्रोविजन आया था करीबन 2 साल पहले। अब सरकार को ये पता चल गया है कि ये एक टैक्स रिकवरी के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, एंड इसको सपोर्ट करके, ग्रो करके, साथ में टैक्स टैप करके, आई थिंक इस प्रोफेशनल फील्ड को बैलेंस आउट करना, साथ में टैक्स रिकवरी करना, फाइनेंस मिनिस्टर को समझ आ गया कि विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। Pharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs.
To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. वेलकम, आप देख रहे हैं मनी 9। लगातार हम बजट को डिकोड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज सरकार ने जो बातें कही हैं, जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, इसका असर आप पर, इकोनॉमी पर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे किस तरह से पड़ेगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस लाइव बातचीत में। विवेक अय्यर हैं, पार्टनर फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क फ्रॉम ग्रैंड थॉर्नटन। विवेक, वेलकम टू मनी 9। साथ ही में शैली गुप्ता है मेरे साथ, एसोसिएट वैश एसोसिएट एडवोकेट से, और गौरी चड्ढा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इनिशियल रिएक्शन मैं लेती हूँ। मुझे पता शैली आप पहले से बनी हुई हैं और इस पर बात कर रही हैं, पर इससे पहले आप डायरेक्ट टैक्स से भी जुड़ी हुई थी, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी शैली की बात हो रही थी कि भाई डायरेक्ट टैक्स में हम कुछ तो मिडिल क्लास, हमारे जैसे सैलरी लोगों को कुछ तो सरकार देंगी, पर आई थिंक एफएम ने बहुत क्लियर कर दिया कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे चल रहा है और टैक्सेस पे कोई राहत नहीं मिली है। आपको भी यही उम्मीद थी क्या शैली? देखिए, उम्मीद तो सभी की काफी बनी रहती है। हर बजट से पहले विश लिस्ट काफी लंबी होती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की। पिछले साल काफी कुछ ऑलरेडी कर चुकी थी एफएम, सो इस बार मिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस थी, तो इतना बड़ा शॉक नहीं लगा हमें। ओके, तो शॉक कम लगा। विवेक, ओवर टू यू। आप बताइए, जिस तरह से अभी हम ग्लोबल अनसर्टनिटीज के दौर से गुजर रहे हैं, करेंसी की डिवैल्यूएशन एक चिंता बनी हुई है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर के हमने मदर ऑफ ऑल डील तो कर ली, लेकिन एक जो फादर ऑफ ऑल डील अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको जवाब देना भी बहुत जरूरी है। और आपको क्या लग रहा है, क्या ये बजट उनको जवाब दे पाएगा? जिस तरह से मैं देखता हूं, उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है, हमारी फोकस जो बजट की भी रही है, इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हमको इंश्योर करना है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, जो हम फोकस रखें फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से और कैपेसिटी बनाने के लिए। सो लास्ट ईयर के जब बजट की शुरुआत हुई, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन्ड ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, ये एक सर्टेन चीज़ें हैं जो हमने अचीव की हैं। इस बजट की आस्क ये थी कि हम एक कंटिन्यूटी रखें उन्हीं रिफॉर्म्स पर, उन्हीं पाथ पर, एंड उस कंटिन्यूटी की ज़रूरत ज़्यादा थी रैदर देन एनी बिग बैंग रिफॉर्म्स। सो हमारी जो जर्नी है वो हमें रखना ही है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, तो इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है जो कहते हैं कि व्हाट इज नीडेड इज स्ट्रेटेजिक सोब्राइटी रैदर देन डिफेंसिव पेसिमिज्म। स्ट्रेटेजिक सोब्राइटी विच टेक्निकली मीन्स ये गवर्नमेंट की स्टैंड भी है कि हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली जो कर रहे हैं हमारी ग्रोथ के लिए और जिस इस देश की ग्रोथ के लिए हमको जो करना है, हम उसी पे ध्यान दें और उसी पे फोकस करें। जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, जो फ्री ट्रेड जोन है, अगर आप देखा जाए उसकी अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में भी कैप्चर हुई, उसकी इंडिकेशन ये है कि गवर्नमेंट को पता था कि ये चीज़ होने वाली है। वो अनाउंसमेंट के लिए रुके थे, वो इकोनॉमिक सर्वे में भी बिल्ड हो गई। सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जवाब दे रही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो बस चिल्ला नहीं रही है।
ओके, सो आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे से जो बातें निकल कर आई उसी पाथ पर गवर्नमेंट चलती हुई नजर आ रही है और एक कंटिन्यूटी जिसकी जरूरत है उसको फॉलो करते हुए। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जुड़ी हुई हैं। गौरी, रिटर्न के फ्रंट पर अगर हम बात करें, इनकम टैक्स के फ्रंट पर, तो क्या हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के फ्रंट पर कुछ उम्मीदें थी लोगों की, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को फ्यूचर्स पर जब उन्होंने बढ़ा दिया है तो हमने आज शेयर बाजारों का बहुत शार्प रिएक्शन देखा है। और मुझे लगता है मेरे जैसे मिडिल क्लास का भी शार्प रिएक्शन यही रहा कि भाई आपने टैक्स में हमें कोई राहत नहीं दी है। तो ये एक सेंटिमेंट जो बन रहा है, ये जरा सा बताइए, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए कुछ निकल कर नहीं आया? नहीं, टैक्स पेयर्स के लिए देखिए कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया गया था टैक्स पेयर्स के लिए। और आप ये देखिए कि जो लास्ट ईयर जो किए थे चेंजेस, वो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हुए हैं। इसकी रिटर्न अभी फाइल भी नहीं हुई है। टैक्स पेयर्स ने अभी वो ही चीज़ एब्जॉर्ब नहीं की है कि हमारा कितना टैक्स बचा है इस साल में। तो ये पहला ही साल था। अब इसी साल जब इम्प्लीमेंट हुआ है, अब दोबारा बजट में टैक्स पेयर्स को अगर बोलें कि हमें अब और राहत चाहिए, होने वाला नहीं था। हर साल इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। मुझे लगता है लास्ट ईयर आ गए, अब कुछ सालों तक टैक्स पेयर्स को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जो आपने बात की रिटर्न फाइलिंग को लेके, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसीजरल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। जो रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं, वो इस साल हमने देखा कि सरकार को भी परेशानी आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी टाइम से नहीं आई, बार बार AIS चेंज हुआ, ड्यू डेट्स जून में ही बढ़ा दी थी और सितंबर कर दी थी, और उसकी वजह से जो हमारी रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर, जो कि कई साल पहले 31 मार्च ही हुआ करती थी, उसमें बहुत कम समय रह गया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि रिवाइज रिटर्न की डेट को दोबारा बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। हालांकि अगर आप रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो आपसे एक स्मॉल फी ली जाएगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन भी किया है। अब वो फी कितनी होगी ये अभी पता नहीं है। आई होप वो स्मॉल अमाउंट ही हो। अगर वो स्मॉल अमाउंट दे के आप रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। जो रिटर्न्स की डेट चेंज की गई है, यानी कि जो ITR 1 और 2 भरते हैं, यानी कि सिंपल रिटर्न्स हैं जिनकी छोटी सैलरी है, छोटा अमाउंट है, बहुत किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, वो 31 जुलाई तक ही भरेंगे। जो नॉन ऑडिट केसेस लेकिन बिजनेस इनकम है या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या इनकम जिनकी 50 लाख से ज़्यादा है, वो लोग 31 अगस्त तक भर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा टैक्स पेयर्स को। लेकिन यहाँ पे प्रियंका, मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखती हूँ कि जो लोग जुलाई में रिटर्न नहीं भरेंगे ये सोच के कि हम तो ITR 1 और 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और कहीं अगर अगस्त में जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिन्होंने जुलाई में नहीं भरी कि हम अगस्त में भरेंगे, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं हम तो उसी के लिए एप्लीकेबल, हमारे उनके एलिजिबिलिटी थी, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो डेट पार कर चुके होंगे। पहला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा टैक्स पेयर्स के लिए, अगले साल से मुझे लगता है वो इजीली एडजस्ट कर जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ओके, और अपडेटेड रिटर्न में भी लेकर के कुछ अपडेट है इस बजट में? अपडेटेड रिटर्न में भी चेंज है, लेकिन अगेन टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं मिला है। अपडेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको हम एक मौका दे रहे हैं बताने का कि आपने अगर कोई टैक्स नहीं दिया है, आपने कोई टैक्स की चोरी की है या अनइंटेंशनली आपने कुछ मिस कर दिया है, तो आप हमें बता दीजिए, टैक्स दे दीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दीजिए और उसके ऊपर पेनल्टी दे दीजिए। जितना जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा पेनल्टी बढ़ती रहेगी। और इस रिटर्न का जो फीचर था उसमें यह था कि आप लॉस कम नहीं कर सकते, आपको टैक्स ही देना होगा और टैक्स पे पेनल्टी भी देनी होगी। तो उसमें एक ये बदलाव किया गया है कि अब आप अपने लॉस को अगर कम करना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, चाहे आपका कोई एडिशनल टैक्स नहीं बन रहा। इसमें अगेन प्रोसीजरल चेंज है, कुछ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, लेकिन टैक्स पेयर्स के हाथ में डायरेक्टली तो इस प्रोविजन से भी कुछ नहीं आने वाला है। इस बजट में टैक्स के फ्रंट पर कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, बस आपके लिए प्रोसीजर्स को सिंपल बनाया गया है। लेकिन एक चीज जो नजर आ रही है वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको लेकर शार्प रिएक्शन हम बाजारों में देख रहे हैं। और मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे विवेक, STT को लेकर के जो रिएक्शन बाजार में दिख रहा है, क्या यहाँ पर सरकार STT लगा करके फिर से कुछ लोगों को और मार्केट के सेंटिमेंट को जो है संभालने में चूक रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट सुधरे।
तो ये जो बिकॉज ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, उसमें काफ़ी वक्त से ऐसा हो रहा है कि सेबी भी जो है अपनी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस कर रही है कि जिन लोगों को ये सेगमेंट की पूरी समझ नहीं है वो बेसिकली ये सेगमेंट में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उस वजह से यहाँ की काफ़ी कॉमन चैलेंज ये रही है दैट वाइल सेबी बोल रहा है कि आपको यू हैव टू बी मोर केयरफुल, आपको और सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ इन्वेस्ट और ये सेगमेंट में जाने के पहले, उन्होंने बेसिकली एंट्री बैरियर इन टर्म्स ऑफ एसटीटी के इंक्रीज से बढ़ा दी। हाँ, डेफिनेटली इसका चैलेंज ये है कि मार्केट सेंटिमेंट तो इम्पैक्ट होगा, और ये तो आज तो फिर भी रविवार है, कल के सेगमेंट में भी या कल के मार्केट ट्रेडिंग में भी आपको इसकी इम्पैक्ट दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट से ज़रूरी था बिकॉज कोई और तरीका है नहीं मार्केट में डिसिप्लिन लाने का। और एक है प्रो मार्केट होना, दूसरा है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सो लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट से ये ज़रूरी था बिकॉज आपको ये जो एफएनओ सेगमेंट है उसे आप यूज़ कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिटर्न एनहेंसमेंट या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं कीजिए। सो मेरे हिसाब से इवन दो सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में खराब होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये